So आज को जो सेशन है राइट, सो वी गोना डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो हम आज करने वाले हैं राइट. सो वी गोना अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर बी आई इज ओके. इसके इसका बेसिक आर्किटेक्चर, मतलब पावर बी आई अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स और द सर्विसेज अवेलेबल इन द पावर बी आई. And next part you're going to learn about the UI part. So आज I'll just give a complete overview of the entire UI. मतलब how to open, how to close, how to save, right? बहुत सारे इसमें settings हैं, right? So बहुत सारे options हैं. And ये सारी चीज़ें आपको आगे whenever you click it. So just by watching lot understand, right? So अगर आप कोई भी चीज़ या कोई भी tool अगर use करना चाहते हो, you should click, you need to make a mistakes and then only you'll able to learn it. अगर आप सिर्फ देख रहे हो, I think like you're not able to understand. ठीक है? So make sure you have the Power BI. Even I'll show how to install it, right? So how to open, how to close, and what are different options. Basically, the entire UI of the Power BI. So specifically, आज हम import सीखेंगे, right? So we have a different sort of connections in the Power BI. So because Power BI के अंदर कुछ भी start करने से पहले we need to have a data, right? So we should learn how to get the data from different places. जैसे SQL Server हो गया, या even I need to get the data from Excel, CSV, right? So उसके अलग अलग connection methods हैं. There is something called direct method, import method, live connections. So you're going to learn about that specifically today's topic, right? जहाँ पर you're going to learn, you will be very confident to get the data from some different data sources, right? So that's what the meaning of import data from Excel, CSV and databases. ठीक है? Yeah. Huh. So next, we're gonna introduce the Power Query editor, right? Already हमने, I think in the Excel, I don't know if they have showed you the Power BI, Power Query editor. So we're gonna understand like how to open the Power Query editor. इसका अलग session होगा जहाँ पर हम Power Queries separately एक session में पढ़ेंगे. But I'll show you like how to open and what actually the Power Query is. So then we're gonna see like simple dashboards kind of interface. मतलब आज का आपको जो session है, it's like completely it's just an introduction to Power BI जहाँ से आप just basic चीज़ें सीखोगे, how to open, how to close, how to import the data, how to drag and drop, okay, how to build some lightweight charts, right? So basic formatting and the best practices, okay? So this is what your today's objective is. ठीक है? So as I told you, so what is the meaning of Power BI? So इसका कोई extension, I mean like इसका कोई full form नहीं है. So Power BI is a BI tool, right? It's a business intelligence tool by the Microsoft, right? So what is its purpose? So it helps to visualize the data and create interactive reports. मतलब
enable the faster insights compared to your static Excel, right? So Excel जैसे मैंने बताया Excel power Excel में भी आप बना सकते हो Python, but it's not a BI tool, right? So Excel is also can be used to build a dashboards. मतलब जैसे Power BI बना के देगा, जैसे जो features Power BI के अंदर है, of course that's not there in your Excel. So that's what. So it will give the faster insights when we are comparing that with the Excel reports. Okay, just say, okay. So we have one query. Sinha is asking me what is the difference between BI and Excel. See, Excel is your all-rounder, okay, all-rounder data analytical tool. है, ठीक है? So Microsoft Excel is something boom to analyst because क्यों है? Why I'm telling this because ये tool जो है, right, so it is used by multiple peoples. Okay, so one for the data saving. Okay, very basic मैं आपको overview दे रहा हूँ. अगर आपको Excel या Google Sheet use कर रहे हो, so only thing you are going to use quickly is for the storing the data, ठीक है, for sharing, for accessing. इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो? Okay, this is the what the people generally use for. अगर आपको data share करना है, you directly open Excel या Google Sheet, copy paste and send it. करेक्ट, इट इज़ अ बेसिक पर्पज. अगर आप कोई भी डेटा अगर आपको शेयर करना है, सो दिस इज द कॉमन मीडियम जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, सो व्हाई इट इज स्पेसिफिकली यूज इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड, बिकॉज नॉट ओनली डेटा सेविंग, ओके, यू कैन डू अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स. जैसे आपने एक्सेल ऑलरेडी पढ़ा है, यू कैन डू लॉट मेनी, मतलब बहुत सारे फॉर्मुलाज अप्लाई कर सकते हो. यू कैन क्लीन द डेटा, यू कैन ट्रांसफॉर्म डेटा, यू कैन क्रिएट पिवट टेबल्स, यू कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड्स, राइट? सो वी हैव द VBA ऑल्सो. आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं था. हैव यू हर्ड अबाउट VBA? विजुअल बेसिक्स. ओके, विजुअल बेसिक्स प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ अ लैंग्वेज है जो आप एक्सेल में ऐड कर सकते हो. ओके, कैन डू लॉट मेनी ऑटोमेशंस इन एक्सेल ऑल्सो. और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूल है, राइट? सो इट्स लाइक अ ऑल राउंडर. ओके, सो कैन क्रिएट मेनी थिंग्स. सो व्हाट इज एक्सेल नाउ? इट्स जस्ट एनालिटिकल टूल्स मेंट फॉर डेटा एनालिसिस. तो इसलिए हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ओके, इफ फॉर डेटा शेयरिंग, डेटा स्टोरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, फॉर ऑल थिंग्स, राइट? इवन फॉर द डैशबोर्ड्स, राइट? सो बहुत सारी चीज़ों के लिए यू कैन एक्चुअली यूज़ द एक्सेल. अगर आप पूछ रहे हो सर कैन आई यूज दिस एक्सेल फॉर द बिग डेटा, देन आई से नो. व्हाई? बिकॉज एक्सेल कैन नॉट हैंडल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. अगर आप 10 मिलियन रोज या 20 मिलियन रोज की बात कर रहे हो जहां पर आपको डेटा प्रोसेस करना है, या जहां पर अगर आपका डेटा सोर्स मिलियंस ऑफ रोज जनरेट कर रहा है हर दिन, एंड यू कैन नॉट बिल्ड दिस काइंड ऑफ यूज केसेस इन द एक्सेल, राइट? इसके ड्रॉबैक्स हैं. Okay, this is what the Excel is. But what is Power BI now? So Power BI is actually designed for the real-time use cases. अगर आपको कोई भी रियल टाइम डैशबोर्ड्स बनाना है जहां पर आपका डेटा सोर्स इवन मिलियंस भी जनरेट हो रहा है या बिलियंस भी जनरेट हो रहा है, सो इट कैन हैंडल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट? सो इट्स मेंट फॉर दी बिल्डिंग अ डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. और इसके साथ साथ आप क्लीन भी कर सकते हो. इज इट ETL टूल? नो, इट्स नॉट ETL टूल. इट्स अ BI टूल. इट्स ओनली मेंट फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस टू क्रिएट अ डैशबोर्ड्स एंड द रिपोर्ट्स. ओके, ओके. सो आसिफ इज आस्किंग व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैबलो एंड पावर BI. दोनों BI टूल्स ही है, ठीक है? ये अलग कंपनी है, वो अलग कंपनी है. सो आगे आप पढ़ोगे लाइक हाउ टू वर्क इन टैबलो ऑल्सो, राइट? सो अब जो आप इधर पढ़ रहे हो, इट्स दिस ऑल्सो BI टूल, इवन दैट इज ऑल्सो BI टूल. इसलिए मैंने इधर अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाया. ओके, सो वॉट एवर राइट नाउ यू आर लर्निंग इज नॉट स्पेसिफिक टू पावर BI. जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, यू विल गोना लर्न हाउ टू वर्क इन टैबलो ऑल्सो, हाउ टू वर्क इन टैबलो, हाउ टू, आपके सिलेबस में नहीं है बट या. सो अगर आपको पावर BI एंड टैबलो पता है, देन इजीली यू कैन वर्क इन लुकर स्टूडियो ऑल्सो, right? So Asif Ali, this is just two different tools. Okay, so both are BI tools meant for creating reports and dashboards. Yes, any other doubts? Okay, just understood, like समझ में आ गया like what is the meaning of Power BI? Just a business intelligence tool. Okay, इसलिए हम BI का मतलब क्या है? Business intelligence tool. Okay, why we are using this? To create reports and the dashboards. Yes. Yes, Sachin, you need to learn both. If you learn both, it's good for you. Okay. Any other doubts? I'm just waiting. अगर कुछ जो मैं अभी तक मैंने explain किया, if you have any doubts in that, please let me know. Yes, all good? Okay, next up is all about the installation. Okay, one bad news for the Mac people because they cannot use the Power BI in the Mac. Mac एक Apple का product है, so you cannot create a Microsoft account and you can create Microsoft account लेकिन आप download नहीं कर सकते Power BI, ठीक है? So this is for the specifically for the Windows. And आप requirements देख सकते हो. Okay, so minimum requirements is Windows either 10 or 11 or the latest version, and minimum you should have the 4 GB RAM in your system and 1 GB disk space. ठीक है? अगर आप
नहीं है, then you cannot work easily in your Power BI. ठीक है? So I'll show like two different ways. So one of the easiest way to download is uh, you can go for Microsoft Store. Okay, can you open the Microsoft Store? Okay, I think आपने आपके सिस्टम में अगर आपने विंडोज है, of course for sure you'll have the Microsoft Store. I'll tell about that. Shaz, I'll tell. Please open Microsoft Store and you can just type for Power BI Desktop. Okay, so we have something called Power BI Desktop. आपको बहुत सारे ऑप्शन इधर दिखाई देंगे. I'll just tell like what you need to select. Okay, so there is a tool called Power BI Desktop. Okay, so आपको इसको install करना है. So Power BI Desktop and you need to click on Get. Okay, आपको इधर Get का ऑप्शन दिखाई देगा because already I have installed it, so I'm getting open here. Okay, please do it. Okay, please you need to do it along with me. Whatever has happened is happened. अगर आपने ठीक से नहीं किया है for whatever the previous topics is, but at least from this particular topic जो हम कर रहे हैं, please try to do it. अगर आप हर टॉपिक के लिए ऐसे सोचोगे I'll do it later, that later will never come. Please go to Microsoft Store. I think this is the best way, यही easiest way है. And the other way is you can go and open your browser. आप इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, but that requires installation process. जैसे Power BI download. For Mac you cannot install. ठीक है, so आप इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, so from their website. कई बार ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को नेविगेट कर देता है. हाँ, सो फ्रॉम हियर ऑल्सो कैन डाउनलोड, बट आई सजेस्ट गो विथ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. ठीक है, प्लीज डू इट. फ्रॉम क्रोम या जहूर. ओके, नीड टू गो हियर एंड क्लिक ऑन डाउनलोड. या अभिषेक, आई टोल्ड लास्ट वीक बट आई एम जस्ट टेलिंग वंस अगेन व्हाट टू डू. हाँ, सो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड इवन आई एम शेयरिंग दिस लिंक. अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. आई एम शेयरिंग दिस इन चैट. अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, दैट इज द बेस्ट वे टू डाउनलोड. अगर नहीं है फॉर एनी रीजन, सो प्लीज गो एंड डाउनलोड फ्रॉम हियर. ओके, पावर बीआई डेस्कटॉप. पावर बीआई डेस्कटॉप. या सुनिधि, व्हाट डॉट. In Microsoft Store, you need to type Power BI Desktop. Microsoft Power BI Desktop. Good, Deepak. Good. You can share me. I'll just see. Okay. If you're okay to share it. Okay. Okay. Used Airbyte. ठीक है, ठीक है. Okay. From where you got the data? पूजा विल गेट अपडेट ऑप्शन. अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इफ यू वांट लेटेस्ट वर्जन, आई थिंक आपको इधर अपडेट ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, आई थिंक इट विल ऑटोमेटिकली गेट्स अपडेटेड. अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट, सी इसमें एडवांटेज क्या है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हो, अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी वर्जन अपडेट्स आ रहा है, ऑटोमेटिकली दैट गेट्स अपडेटेड समटाइम्स. ओके, बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स. कई बार ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है. ठीक है, बट अगर आप इधर से डाउनलोड कर रहे हो, सो देन यू नीड टू मैन्युअली डू इट. अगर आप क्रोम से जाके फिर डाउनलोडिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट, देन यू डू इट मैन्युअली अपडेट्स. लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच. ओके, सो प्लीज गो टू योर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड क्लिक ऑन गेट. हाउ मेनी आर डन? नो करो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. आई थिंक आपका कोई इंटरनेट इशू होगा, जस्ट रीजॉइन इट. जी डन. ओके, नॉट डन सर. ओके, डू इट सुमांगिनी, आई एम वेटिंग. आई एम नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन. नो, आई एम शेयरिंग. नो.
whatever you see like apart from this, okay, सारे it is not from, हाँ ये मतलब sometimes this will be from third party, मतलब अगर आप कोई see you need to check अगर ये Power BI से then you need to install, ये कुछ this will be your report builder या कुछ kind of an help या add-ons, okay. So ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, don't get any other things, okay, apart from this, because you can check here this is from your Microsoft corporation, ठीक है. So whenever you're installing anything, any application, so make sure you install from your trusted partner, right? So अगर आपको दूसरे पावर बी आई ऐसे कुछ चीज़ भी दिख रहा है, मे बी इट्स फ्रॉम योर डिफरेंट पीपल, नॉट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है. फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट दे हैव दिस वन प्रोडक्ट फॉर द पावर बी आई, दैट इज पावर बी आई डेस्कटॉप. हाँ, जस्ट क्लिक ऑन ओपन, ओके, इवन आई जस्ट ओपन इट, आई क्लिक, एक बार आप इंस्टॉल करने के बाद, ओके. या अंचल, व्हाट यू आर आस्किंग व्हाट आई शुड डू बिकॉज आई डोंट हैव अदर पीसी. डोंट साइन इन सौरभ, यू जस्ट डोंट साइन इन. अगर आपका विंड माइक्रोसॉफ्ट का लॉग इन पूछ रहा है देन यू नीड टू साइन इन, ठीक है. सो आई जस्ट गो हियर से, अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वाला देन नीड टू गो एंड create it, okay. So let me just open here Power BI. So Power BI desktop, so let me just open this. आप डायरेक्टली इधर से भी ओपन कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट ओपनिंग फ्रॉम हियर. ओके, सो जैसे आप इसको ओपन करोगे दिस इज हाउ इट लुक्स, ओके. सो डोंट डू एनीथिंग, डोंट साइन इन. अगर आपको विंडोज अकाउंट का साइन इन पूछ रहा है देन दैट्स ओके, यू कैन डू इट. आगे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर रहे हो, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन पूछ रहा है देन यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट, then you can download it. Okay, once you open the Power BI, don't sign in. Okay, इधर आपको कुछ साइन इन नहीं करना है, just hold on. Okay, you don't sign in, you can see my signed in account, but आप sign in मत करो, ठीक है. I'll tell why and why, what is the reasons and all sort of things. Yeah, yeah, do it. Yeah, Shubhangini, I'm waiting. Do it. Yeah, yeah, I'm waiting. Don't worry. Install it. No. Once done, let me know, ठीक है. Yeah, don't sign in Power BI. Hold on. I'll tell Verma. Okay, ये सारी चीज़ I'll tell it. Okay, I'll tell each and everything. Don't worry. I'll tell everything. Done. Okay, do it. Yeah, Anchal, what help you needed? You were asking about that Chrome, right? What doubt? You tell me in the one single message, okay? Anchal, yeah, tell me like what's your doubt? For the Mac, sorry, we don't have option, Anchal. Okay, you can wait for Tableau. Um, you can do Power BI service. What I can suggest is Anchal, you can go to Microsoft Power BI service and try to register there. Okay, let me know like what you're getting it from. For the Mac, we don't have. Okay. Either you should have some, or you can create some AWS account and create some Windows machine, and there you can install it. But I suggest like not to do it. Uh, you watch it, okay? Or you can do one thing. You can open the Power BI server.
sorry, Power BI service. And from there, you just create an account there. So there also you can actually practice what we're right now doing it. Until, okay. But for the Mac, trust me, I can't help in that because we need a Windows for that. Okay. Done? Yeah, Priyanka, just select the language and do next. So you'll get like this. Okay, अगर आपने install कर लिया, you'll get like this. Installation done, then open. Don't sign in. अगर आपको कोई sign in कुछ चीज मत करो. Just do it along with me. Okay, मैंने बोला, did I told anything about sign in? Just open it. That's it. Don't do anything. Yeah, Sunidhi, download. I know. I'll wait for next 5 minutes. Okay. Download it and please make a notes for this. Okay, notes in the sense running notes बना लो, and even you can take a screenshot and paste it in some Google Docs, whatever it is. Even you'll get all these slides, ये सारी चीजें आपके आपको मिलेंगे. But I personally suggest, like, जब आप कोई भी एक नया चीज या नया टूल पढ़ रहे हो, make sure even you create your own notes. Okay, so you'll get to know, like, अगर कुछ doubts you can ask me, right, while writing or while I'm saying something. I ऐसे कुछ चीजें you not understood, then you can ask me in the chat also. 90% हो चुका है. ठीक है, डाउनलोड. See, even in this slide, there is a download page. Okay. So I think you already have this slide, right? So this is for the people who don't have the Microsoft account. How many are done? No, Sachin. I'll talk about that Power BI service. I'll tell. I'll just raise a poll about the installation. Just a second. Okay, I'm just raising a poll for the installation. अगर आपको install हो चुका है, please give the response so that I'll get to know, like, how many people have installed it. Okay, sorry. एक second. There is some years of experience. एक second. No, don't buy any sort of subscriptions, nothing. Okay, I have launched the poll. Please respond. ठीक है, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है, so just give a S. जो लोग नो दे रहे हैं, what is happening, like, for the no, is it Mac or is it downloading still? अगर डाउनलोड हो रहा है, give it S itself. ठीक है, S ही देना. ठीक है, but I'll get to know, like, how many people are Mac or how many are Windows. How many are Mac apart from Anshul? Yeah, Priyanka, accept the terms, licenses, सारी चीजें. Just that steps you do it. Okay, accept the lines, license and all sort of things. Don't sign in. Okay, just keep it as it is. अगर आपने साइन इन किया भी है, आई थिंक इट विल नॉट अलाउ इट. ओके, सागर इज मैक. ठीक है. सो द पीपल हु आर इन मैक, राइट, गो टू पावर बी आई सर्विस. ओके, आपको क्या करना है, पावर बी आई सर्विस जाना है. गो टू क्रोम, आई मीन, लाइक, एनी गूगल सर्च पावर बी आई सर्विस एंड ट्राई टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड ओपन द पावर बी आई सर्विस. उसमें क्या इशू आ रहा है, जस्ट लेट मी नो. आर यू एबल टू क्रिएट योर पावर बी आई सर्विस अकाउंट यूजिंग योर नॉर्मल जी मेल आई डी फॉर द मैक पीपल? ओके, रोशनी इज वॉचिंग लेक्चर लेटर, विल डू इट. ठीक है. ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग दैट वे, दैट्स फाइन.
Okay, so almost 70% people have installed it. Tanish Verma, I'm just waiting for the people who are downloading. Okay, even if I start without that, then because they are installing, right? So I want them to install because today's class is all about installation and understanding about the Power BI. Okay, done. I told 5 minutes. I think like it's almost done. Okay. Okay, I'm sharing a poll results also so that आपको पता चले like how many people have installed it. Okay, so 70, almost 80% have installed it. So I'm gonna start. I'm gonna just explain. Okay, meanwhile, just let it download. Okay, fine. Yeah, yeah. मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, right? So actually, I am taking all the sessions in Hindi only. Okay, हिंदी मैं इंग्लिश तो मतलब बहुत ही कम ही यूज कर रहा हूँ. I think. ठीक है. I'll close this. Yeah, fine. So Power BI अब इंस्टॉल हो चुका है. Please concentrate. Let it concentrate. Now this is just a theory part. सी पावर बीआई के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. सो यू कैन थिंक ऑफ थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ओके, फॉर द बी आई इंटेल जो फॉर द बी आई टूल जो हम एक्चुअली अभी इंस्टॉल किया है. इट्स नॉट ओनली वन. इसमें तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है. लाइक व्हाट इज दिस कंपोनेंट्स आर. ठीक है. सो यू कैन सी राइट नाउ जो हमने अभी इंस्टॉल किया है इट्स कॉल्ड पावर बी आई डेस्कटॉप. ओके, सो दिस इज कॉल्ड पावर बी आई डेस्कटॉप जो हमने अभी इंस्टॉल किया है. फाइन. सो एक्चुअली दिस विल रन ऑन एनी सॉर्ट ऑफ सर्वर. अगर आपको क्लाउड में भी रन करना है, अगर आप कोई भी एक वर्चुअल मशीन ले रहे हो, ठीक है, इट्स लाइक एन ऑनलाइन लैपटॉप, आप उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हो. सो पावर बीआई डेस्कटॉप जो आपने अभी इंस्टॉल किया है, करेक्ट. एंड देर इज समथिंग कॉल्ड पावर बीआई सर्विस. ओके, और एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है. इट्स कॉल्ड पावर बीआई सर्विस. ओके, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द कंजम्पशन कंपोनेंट जहां पर पावर बीआई मोबाइल ऐप भी बोलते हैं. ठीक है. एंड यू कैन एक्सेस द रिपोर्ट्स ऑफ वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड इन दी मोबाइल ऐप ऑल्सो. ठीक है. इसके बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट्स है. सो इवन इन द स्लाइड ऑल्सो यू कैन चेक. सो वन इज द पावर बीआई डेस्कटॉप. आई टेल व्हाट इज दिस. ठीक है. एक आपका कंपोनेंट है पावर बीआई डेस्कटॉप. सो दूसरा जो कंपोनेंट इज कॉल्ड पावर बीआई सर्विस. एंड तीसरा एक कंजम्पशन कंपोनेंट है. ओके, इट्स नॉट इंक्लूडेड हियर. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट कॉल्ड पावर बीआई मोबाइल ऐप. ठीक है. सो पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप. ठीक है. सो इंस्टॉलेशन हमको समझ में आ गया. हम इंस्टॉल कर रहे हैं कोई भी एक सर्वर के अंदर. जैसे हमने एक विंडोज मशीन के अंदर उसको इंस्टॉल किया है, या आप कोई भी एक क्लाउड विंडोज मशीन के अंदर भी या कोई भी सर्वर के अंदर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस. ओके, सो पावर बीआई डेस्कटॉप एक फ्री डेस्कटॉप एप्लीकेशन है. ठीक है. इसको आपको कोई पे नहीं करना है. इट्स कंप्लीटली फ्री एप्लीकेशन, कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर. तो जहां से आप कोई भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं. ठीक है. यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस. आप डिफरेंट सोर्सेस से डेटा लेके आ सकते हो एंड आप रिपोर्ट्स बना सकते हो. एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसको आपको कोई भी पे नहीं करना है. ठीक है. सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप. अगर आपको कोई भी पूछ भी रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स वी हैव इन द पावर बीआई. सो वी हैव पावर बीआई डेस्कटॉप, वी हैव पावर बीआई सर्विस एंड वी हैव पावर बीआई मोबाइल ऐप. सो पहला जो हमारा कंपोनेंट है पावर बीआई डेस्कटॉप, इट्स मेंट फॉर बिल्डिंग अ रिपोर्ट्स. ओके, इसमें आप रिपोर्ट्स बना सकते हो या रिपोर्ट्स बना सकते हैं. आई एम नॉट टेलिंग डैशबोर्ड्स बिकॉज डैशबोर्ड्स का इसमें थोड़ा स्लाइट अलग कॉन्सेप्ट है. आई टेल व्हाट इज डैशबोर्ड्स आल्सो. इसमें आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं. ठीक है. रिपोर्ट्स का मतलब क्या है. ऑल सॉर्ट ऑफ योर एनालिटिक्स जो आप क्लाइंट्स को शेयर करना चाहते हो, व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द बिजनेस, आप एक कंप्लीट एक रिपोर्ट बनाओगे एंड यू गोना डू दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट्स इन द पावर बीआई डेस्कटॉप. ठीक है. इसके की पर्पस क्या है. इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सेल, सीएसवी, कोई भी डेटा वेयर हाउसेस है, राइट. सो यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम एनी प्लेसेस. अब इसमें आप पावर क्वेरी एडिटर भी है. आई शो लाइक हाउ टू ओपन द पावर क्वेरी एडिटर ऑल्सो. इसमें आप क्लीन कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट. इवन यू कैन क्रिएट अ चार्ट बिकॉज इज मेंट फॉर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इटसेल्फ. जैसे मैंने बताया, इट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग अ टेबल्स, सॉरी, क्रिएटिंग अ रिपोर्ट्स, चार्ट्स, ऑल सॉर्ट ऑफ स्लाइसर्स. ठीक है. बेसिकली द बिल्डिंग अ रिपोर्ट्स. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ योर पावर बीआई डेस्कटॉप. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू सेकंड कंपोनेंट. सो सेकंड कंपोनेंट आपका है पावर बीआई सर्विस. ओके, अभी तक देख सकते हो इवन इन दी दिस डायग्राम. सो दिस इज योर पावर बीआई. So this is your Power BI service. So what is the purpose of Power BI service? So for example, you're working in an organization
and now you want to share that particular reports to others. जैसे for example you want to share that to clients, or you want to share that particular reports to your colleagues in a company. ठीक है? शेयरिंग और रिपोर्ट्स इन कॉलीग्स इन कंपनी इन द सेंस लाइक फॉर जैसे अगर आपको क्लाइंट्स को शेयर करना है एंड यू वांट टू मेक इट पब्लिक, पब्लिक इन द सेंस यू कैन, जो आप बना रहे थे रिपोर्ट्स, यू वांट टू मेक दैट रिपोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर द अदर्स, राइट? So उसके लिए we need another service or another component in Power BI called Power BI service. एक Power BI service is actually a cloud based. इसमें कोई मतलब आपको इंस्टॉल नहीं करना है. It's completely browser based. So जहाँ से आपको साइन इन करके and you actually look around like जो आपने शेयर किया, you can see all those reports in Power BI service. तो Power BI service आपको कहाँ दिखाई देगा? So Power BI service आपको दिखाई देगा here. Okay. सो अगर आपने साइन इन किया है, वाई एम टेलिंग नॉट टू साइन इन, बिकॉज आप देख सकते हो वी हैव समथिंग कॉल्ड पावर बीआई सर्विस. आपने इधर साइन इन नहीं किया होगा, ठीक है? वाई? बिकॉज पावर बीआई सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको कंपनी ईमेल आईडी चाहिए. आई एम लाइक एनी ईमेल आईडी विच इज नॉट @gmail.com, yahoo.com और एनी अदर मेल आईडीज, ठीक है? सो इट शुड बी आइदर योर स्कूल, कॉलेजेस या कंपनी डोमेन्स, ठीक है? सो ओनली दोज accounts are only accessible for the Power BI service. ठीक है? But I'll open and show you. I have some account here for the Power BI service. So which is not my @gmail.com. ठीक है? Because आप @gmail.com से cannot register it for your Power BI service. ठीक है? You should have some company profile, company mail ID. Then only you can actually do the sign in into this Power BI service. So अब ये आपको Power BI service कहाँ से access मिलेगा? From here. Okay? So for example, हाँ, edu.com भी होगा. Yes, Shubhang. You can use your college email IDs also. ठीक है? जैसे I'll just open it and show you in case if you don't have. So if I open this Power BI service, so Power BI service, this is how it looks. Okay, it will open another application called Fabric. So जहाँ से आपको you need to just do a normal your account sign up. जैसे मेरा Microsoft का account, this is what the account I'm using even for the Power BI desktop. So ये same account होना चाहिए, ठीक है? Power BI desktop as well as the Power BI service का same Microsoft का account होना चाहिए. So this is how your Power BI service looks. So this is your browser based. इसमें आपने कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया है. Why it is used for sharing? ये आप ये कैसे यूज करेंगे? What is this different things you're going to understand in detail. I'm just giving you an overall view because जब आप Power BI start करोगे, you should know that there are the different components we have. So we have Power BI desktop जहाँ पर it's a free tool जहाँ पर आप reports बनाओगे. अगर आपको share करना है across your clients, okay, then आपको Power BI service की जरूरत मिलेगी. This is how you're going to access the Power BI service. ठीक है? This is your second component. And जो third component है, so it's like an component, या you can say like it's one of the end users. अगर आपको clients को share करना है in form of mobile applications. So Power BI mobile करके एक ऐप है, so जहाँ से आप Android या iOS को डाउनलोड कर सकते हो, and even you can share the reports to your clients also. Because कई बार ये भी हो सकता है कि whatever the reports you want to share it, okay, that reports you are sharing in the mobile. I mean like you want to share the clients in the mobile. ओके, सो मोबाइल का व्यू थोड़ा अलग रहता है इन द वेब व्यू, राइट? सो अगर आपका ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स है जहां पर आपके जो भी आपने रिपोर्ट्स बनाए, वी वांट टू शेयर दैट टू योर क्लाइंट्स थ्रू अ मोबाइल, सो वी हैव एन ऐप फॉर दैट. तो ये आपका एक तीसरा कंपोनेंट मान सकते हो, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू कैन सी द एंटायर काइंड ऑफ ए फ्लो. सो यू हैव एन, यू आर ए यूजर, ओके, यू आर ए डेवलपर जहां पर आप रिपोर्ट्स को बनाओगे. सो फॉर दैट यू गोना गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट टूल्स, एंड जैसे आपने उसको बना दिया, यू गोना शेयर दैट टू अ टीम, या यू वांट टू शेयर दैट टू फॉर क्लाइंट्स. आप उसको पुश करोगे पावर बीआई सर्वर के अंदर, एंड पावर बीआई सर्विस से, या यू कैन इवन कंजम्पशन लेयर, जैसे अगर आपको यू वांट टू शेयर दैट इन द टैबलेट्स, फोन्स, राइट, फॉर द डेस्कटॉप ऑल्सो कैन शेयर फ्रॉम द पावर बीआई सर्वर. ठीक है? सो पावर बीआई सर्विस, तो आपके मेजरली दो याद रख लो, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस. ठीक है? सो पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विस. सो ये आपका पावर बीआई डेस्कटॉप है जो आपने अभी इंस्टॉल किया है, एंड व्हेन यू एक्चुअली साइन इन यूजिंग योर आइदर एडू मेल और एनी कंपनी ईमेल आईडीज, ओके, इट विल ओपन द अनदर एप्लीकेशन, उसका नाम होगा पावर बीआई सर्विस. ओके, दिस इज योर पावर बीआई सर्विस. ठीक है? सो दिस इज योर टू मेन कंपोनेंट्स. और इसका यूज क्या है, पावर बीआई सर्विस का यूज क्या है? सो इवन यू कैन सी दैट इन स्लाइड. सो इट इज पावर बीआई, ठीक है? सो व्हाट इज योर पावर बीआई सर्विस फॉर पब्लिश एंड शेयर. आपके जो आपने रिपोर्ट्स बनाए डेस्कटॉप के अंदर, अगर आपको उसको पब्लिश करना है या अगर आपको शेयर करना है, तो आप क्या यूज करोगे? पावर बीआई सर्विस यूज करोगे. ठीक है? सो पावर बीआई सर्विस इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ओके, एंड यूज टू पब्लिश, शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन द रिपोर्ट्स. सो जो लोग मैक यूज कर रहे हैं, सो आई एम टेलिंग यू, अगर आपको एडू का मेल है, ठीक है, सो अगर आपने कॉलेज में राइट नाउ enrolled, have some edu mail, then आप Power BI सर्विस को
लॉग इन करके यू कैन एक्चुअली सी वॉट एवर वी आर डूइंग इन द पावर बीआई डेस्कटॉप. एग्जैक्ट नहीं रहेगा बट या यू कैन एक्चुअली टेक अ फील ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप ऑल्सो. ठीक है. So what is this Power BI service? Key purpose क्या है? So Power BI service is meant for publishing a report from your desktop to a cloud, sharing a reports with the stakeholders या clients, create a dashboards. तो हम dashboards बनाएंगे Power BI सर्विस के अंदर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, ये आगे हम पढ़ेंगे जैसे हम कोर्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस, क्यों हम इसको डैशबोर्ड बोल रहे हैं, इसको हम क्यों बोल रहे हैं रिपोर्ट्स. ओके, विल अंडरस्टैंड सून. तो वी कैन क्रिएट द डैशबोर्ड्स इन योर पावर बीआई सर्विस. Okay, in the Power BI service, and of course आप data refreshment कर सकते हो. ठीक है, all sort of things you're gonna learn slowly, but in simple, so Power BI desktop is meant for creating a reports and Power BI service is meant for publishing and sharing. ठीक है. And what is a Power BI mobile app? So Power BI mobile app is a Android or iOS based application जहाँ से you can actually view and interact with your reports. ठीक है. So you can access the reports anytime, okay, so in any location because this is an application. आप इधर भी filter लगा सकते हो. Basically you can actually view and access your reports. Yes. Any doubts in these three components? मतलब in these two main components, Power BI desktop and Power BI service. Yeah, Vignesh, student ID से भी होता है. Just check it. Okay. So anyone got it? I mean, like anyone has any sort of edu mail or any mail which is not your @gmail.com yahoo.com. Yeah, सारकत गुप्ता वही मैं बोल रहा हूँ. अगर आपके पास नहीं है then you cannot actually learn Power BI service. But yeah, you can actually you have the recordings, you can view it. But अगर आपको आगे चल के ऐसे कुछ ऑप्शन मिला जहाँ पर आपके पास email ID है, कंपनी email ID या you have a email ID of your school colleges, ठीक है, so you can actually use the Power BI service. Got it? Sorry, sir, Gupta. Understood, right? हाँ. Sahil, हाँ. If you have any email which is Amazon, check it. Okay, because already आपने install कर लिया है. Just check it if you can, if it is opening. How to open this page? So if you want to open this Power BI service, so directly आप login कर सकते हो और from the Power BI desktop can click on to this sign in and directly आपको इधर option मिलेगा Power BI service. शास खान नो, हम फेक ऐसे कुछ नहीं बना सकते हैं बिकॉज ये सारे मतलब अलग डोमेन्स के मेल होते हैं. ठीक है. सो दिस शुड कम फ्रॉम योर फ्रॉम कॉलेजेस डोमेन और फ्रॉम कंपनी डोमेन ईमेल एड्रेसेस. Okay, Srivastava was not there. ठीक है, I'll just quickly summarize जो हमने अभी तक किया है. Yeah, please Srivastava, please listen. Okay, so I was discussing about the three main components, or overall you can take two main components of your Power BI. One is your Power BI desktop, which you have right now installed, and we have something called Power BI service. So Power BI desktop का use case क्या है? To create all your reports, you're going to use the Power BI desktop. एंड फॉर शेयरिंग एंड पब्लिशिंग, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक बार बनाने के बाद अगर आपको उसको शेयर करना है अक्रॉस योर टीम और फॉर योर क्लाइंट, so you're going to use the Power BI service for that. और what is a star mark here? So Power BI service को access करने के लिए you should have the some different domain rather than @gmail.com, Yahoo या whatever the other domains is. So आप public domain से create नहीं कर सकते हो. When I say domain, your Gmail domains, ठीक है. So either you should have your colleges or schools का domain या company का email address अगर हो, you can just actually create it. अगर नहीं है, this is what it is. Okay, so we don't have any other tricks where you can create some fake accounts and try to access it. It's not possible. Yeah, Sumangani, you can do that. You have edu, हाँ, हो जाएगा Sumangani, can do that. ये आपका कॉलेज ईमेल आईडी है ना? आई थिंक लाइक अगर आप कॉलेज में इनरोल्ड हो, आई थिंक लाइक यू हैव गॉट सम ईमेल एड्रेसेस. आई बिलीव यू वुड हैव गॉट इट, राइट? outlook.com, आई डोंट नो लाइक वो काम करेगा. जस्ट चेक इट. ठीक है. हाँ, यू कैन बाई योर ओन डोमेन्स. हाँ, हाँ, हाँ. अगर आपको खुद से कुछ परचेस करना है, आपका खुद का एक डोमेन बना के आपको अगर आपको एक्सेस करना है, कैन डू इट. सो दैट्स योर थिंग. ओके, अगर आपको करना है, ठीक है. So for sharing a dashboard or report, sign in is fine. Yeah. So then you need to sign in. Okay. So अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, then do sign in. अगर आप साइन इन कर रहे हो विथ योर जीमेल आईडी का, आई थिंक ये सिर्फ आपका ये आपको एक्सेसिबल नहीं मिलेगा. यू कैन जस्ट डू अ रेगुलर साइन इन फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, दैट्स इट. हाँ, अगर आपको नहीं है, दैट्स फाइन. ओके. बट यू गोना लर्न, हम ये सारे एक्सप्लेन मतलब कोर्स वाइज यू गोना लर्न ऑल अबाउट पावर बीआई सर्विस. हैंड्स ऑन के लिए आपको चांस नहीं मिलेगा. सो आइदर यू शुड वेक सम मेज. ओके. जैसे आपके फ्रेंड्स हैं या कोई कोलीग्स हैं, ठीक है, सो यू कैन गेट द मेल आई डी फॉर टू एक्सेस टू प्रैक्टिस दिस पावर बीआई सर्विस.
या मोहम्मद जस्ट चेक इट, ओके डॉट नेट, हाँ मोस्टली चल जाएगा, ठीक है, बट एनीथिंग विच इज नॉट योर @gmail.com. या गायत्री, वी गोना बिल्ड द डैशबोर्ड, वी गोना लर्न ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, विल स्टार्ट. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर three main components. Okay, so Power BI desktop, Power BI service, and Power BI mobile app. इसमें कोई doubts है? Understood? No, no, they'll not get to know Pooja. You can register it. Shall I proceed? ठीक है, अभी तक आई थिंक तो बहुत ही सिंपल था. ओके, वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग, जस्ट इंस्टॉलेशन एंड जस्ट got to know what is Power BI and its components. Yeah, Arpit, what I need to confirm? Rohit, yeah, even it's not permanent, आप just sign in कर लेना, मतलब just for the learning purpose, right? Okay. Yeah, Arpit, you can use your corporate account also. They'll not get to know. You can register it and you can access it. ठीक है, सो दिस इज योर एंड टू एंड वर्क फ्लो. इफ यू वांट टू कनेक्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, सो जैसे वी हैव ए डिफरेंट डेटा सोर्सेज, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, राइट, दिस इज योर हाउ यू कैन कनेक्ट विथ योर ईटीएल कॉन्सेप्ट्स. सो यू कैन कनेक्ट योर डिफरेंट डेटा सोर्सेज, फिर उसको ईटीएल टूल ट्रांसफॉर्म करके वी गोना डंप इट इनटू माय स्नोफ्लेक या कोई भी डेटा वेयर हाउसेस, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली कनेक्ट टू माय बीआई टूल्स, राइट. सो फ्रॉम दैट आई कैन बिल्ड रिपोर्ट्स और द डैशबोर्ड विच इज मेंट फॉर माय टीम. ठीक है. Yeah, we're gonna learn both, Saurabh. Okay, Power BI desktop and Power BI service both. अगर आपके सिलेबस में है भी नहीं then I'll teach Power BI service. ठीक है. Fine. Now concentrate. Shall I start now? ठीक है. Please अभी थोड़ा let's be active because here you'll have so many options and so many clicks. Okay. Uh, I'll open the highlighter. You can see my cursor movement so that मैं जहाँ पर navigate कर रहा हूँ, actually you can see it. You can see my mouse highlighter, right? विल स्टार्ट. ऑल गुड. ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया है एंड डोंट डू इट अलॉन्ग विथ मी राइट नाउ. ठीक है, प्लीज आई जस्ट गिव अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर एंटायर डैशबोर्ड, हाउ टू एक्सेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. देन हम स्टार्ट करेंगे लाइक हाउ टू इंपोर्ट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, दूसरे जो हमारे दूसरे टॉपिक्स है. यस, ऑल गुड. ठीक है, फाइन. सो दिस इज योर वेलकम पेज. जैसे आप पावर बी आई ओपन करोगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड यू कैन जस्ट हैव, अगर कोई डाउट है जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज आई एम नॉट गोना एड्रेस नाउ. आई जस्ट स्टार्टिंग आई एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग जो मुझे अभी एक्सप्लेन करना है, देन आई टेक अप द डाउट्स. ठीक है, फाइन. सो हियर जैसे आप ओपन करोगे, दिस योर पावर बीआई डेस्कटॉप. यू कैन सी दिस इज व्हाट यू हैव राइट नाउ ओपन, एंड हियर दिस इज योर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर आपको साइन आउट करना है, वो फ्रॉम वेयर, अगर आपको जो आपने साइन इन किया है, if you want to sign out from your Microsoft account, so you can just do sign out here, and all about your about ये सारे basic explanatory हैं, so where you can actually click and understand like about this app and all sort of things, and कुछ settings. ठीक है, so settings with respect to this Power BI desktop, ये settings के options है, we'll come back to that later. ठीक है, so अगर आप कोई भी different option के अंदर हो, so you can come back to this Power BI desktop by clicking on to this home. एंड होम के अंदर आप डायरेक्टली एक क्विक स्टार्ट देख सकते हो. सो जैसे इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट, जस्ट क्लिक दिस. अगर आपको डेटा एक्सेल से ओपन करना है, जस्ट क्लिक दिस. अगर आपको डेटा सीक्वल सर्वर से लेके आने, कैन जस्ट क्लिक दिस. ये सारे आपके क्विक टेम्पलेट्स है जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, एंड इवन अगर आपने ऑलरेडी कुछ रिपोर्ट्स क्रिएट किया है एंड यू हैव ऑलरेडी सेव्ड इन योर सिस्टम्स, सो आप रीसेंट सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आप एक्सेस भी कर सकते हो. And even if someone has shared those reports to you, even you can click onto this and access those particular reports. So this is your quick home page. So इस home page के अंदर we have just a blank report जहाँ से आप start कर सकते हैं. And even we have the recent report जो हमने अभी तक कुछ create करके अगर आपने save किया, you can actually open from that from your recent section. So अभी तक मेरे पास कुछ है नहीं है. So what I'll do is I'll just click on blank report. Because right now we don't have any previous reports. This is your first time you're learning, and I'll be clicking onto this black report to get started. So when as soon as जैसे आप black report पे click करोगे, of course this is the place जहाँ पर you'll be spending a lot of time in building reports and doing a lot many things. Okay, this is what it will open, and by default a home section open होगा. You can see we have a home section, and ये सारे options is almost like similar to the Excel जैसे आपने click करके access कर रहे थे, right? So we have here home section, इसको हम बोलते हैं ribbon. Okay, these are all same thing जो because ये Microsoft का product है, एंड बहुत सारी चीज़ें आप सिमिलर टू एक्सेल टाइप देखोगे, काइंड ऑफ एन यूआई, राइट. दिस इज योर रिबन एंड यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस, एंड ये ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे जहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो. जैसे इन द होम सेक्शन हैव ए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हियर. सो इफ यू गो टू इंसर्ट,
इंसर्ट में आप अगर जाओ, यू कैन सी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, मॉडलिंग अलग, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, ओके, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, ओके, ये अलग अलग ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन जो आप जो सेक्शन आपने क्लिक किया है इन द रिबन, एंड दोज कंपोनेंट्स विल बी शोइंग ओवर हियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फाइल, इसी रिबन के अंदर आप फाइल ऑप्शन देख सकते हो। सो फाइल विल गो बैक टू योर होम सेक्शन। सो जैसे हमने होम सेक्शन, जैसे हमने पावर बीआई जैसे ओपन किया, वी गॉट दिस होम सेक्शन, राइट। सो राइट नाउ आई एम इन दिस ब्लैंक रिपोर्ट। अगर आप इसको क्लोज करना है, जो अब हमने अभी ओपन किया है, दिस इज योर कंप्लीटली ब्लैंक रिपोर्ट। अगर आप इसको सेव करना है, ओके, सो वी हैव लाइक डायरेक्टली सेव ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन, या डायरेक्टली इसको आपको शेयर करना है, ठीक है। वी हैव ए डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स, ये आप स्लोली सीखोगे वन बाय वन, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू गो ना ओपन एंड एक्सेस इट। अगर आपको दोबारा होम पे जाना है, जस्ट गो क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन होम, सो इट विल गो बैक टू योर होम सेक्शन। अगर आपको जो आपने अभी ओपन किया है ब्लैंक रिपोर्ट, इफ यू वांट टू गो बैक, जस्ट क्लिक ऑन दैट बैक बटन, इट विल ओपन दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है। सो जो आप इधर राइट नाउ देख रहे हो, जो दिस सेक्शन इज कॉल्ड रिबन, एंड आई टोल्ड ये सारी चीजें विल अंडरस्टैंड स्लोली जैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक है। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इधर चार व्यूज देख सकते हो, दिस इज समथिंग दे हैव रिसेंटली एडेड। सो वी हैव a different different view, okay, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम इन दी रिपोर्ट व्यू। So what I'll do is to explain quickly, I'll get some sample data. So what I'll do is, so in the home section आप एक get data section देख सकते हो, जहां से आप data को लेके आ सकते हो, ठीक है। So what I'll do is I'll just quickly get some data from Excel. So I'll click on Excel. So जैसे मैं Excel पे click किया, you can see I'm getting an option. So from where I can load my Excel data. So I'm just loading this sample superstore, मेरा एक sample data है. So I'll just click on open. So अभी automatically data को load करते समय मुझे एक option दिखाई देगा. So जहाँ पर I need to select whether I want to load that particular data और या मुझे उसको transform करना है. Transform का मतलब क्या है? So before loading the data, मुझे उसको क्लीन करना है, ऐसे मुझे जैसे कुछ चेंजेस करना है, इवन आई कैन डू इट। सो दिस इज व्हाट एवरी टाइम विल गेट एन ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं नेविगेटर। सो जहां से आप जिस डेबी डेटा सोर्स को कनेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको इधर सारे टेबल्स दिखाई देंगे। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू थिंग्स, ए बी आई टेल इट स्लोली बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर मैं इसमें कोई भी चीज स्किप कर, इसका मतलब है आगे हम पढ़ेंगे, वाई बिकॉज हियर वाइल एक्सप्लेनिंग देर आर सो मेनी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हियर, ठीक है। सो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देख रहा हूँ। इफ यू आर न्यू टू दिस पावर बीआई, सो दैट विल गेट टू नो द यूआई पार्ट। अगर आप ओपन भी कर रहे हो, देन यू विल नो हाउ टू नेविगेट इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। सो एज सुन एज आप अगर आपने एक्सेल ओपन किया है, सो हियर क्विकली कैन सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ टेबल्स यू हैव इन दैट पर्टिकुलर एक्सेल, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी हैव ऑर्डर्स, ठीक है। सो ये सारे आपका ऑर्डर्स का इन्फॉर्मेशन है। सो जैसे मैंने एक्सेल से एक सैम्पल डेटा लिया, आई कैन सी सम सैम्पल डेटा हियर ऑर्डर्स, एंड सिमिलरली आई कैन सी द पीपल, राइट, टेबल, रिटर्न्स, ये सारा डेटा मेरे एक्सेल शीट के अंदर है। ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे, बट आई वांट सम सैम्पल डेटा टू एक्सप्लोर दिस यूआई। सो इसलिए मैं सैम्पल डेटा ले रहा हूँ, ऑर्डर्स, एंड क्लिक ऑन लोड, ठीक है। सो जैसे मैं इस पर लोड पे क्लिक करूंगा, आई गॉट दैट सैम्पल डेटा, इवन यू कैन सी दैट लोडिंग पार्ट हियर। अभी एक you can see that's your loading part. I think load होगा, हाँ हाँ, okay, it's loading, okay। So just to summarize what I've told here, just this ribbon part, right? इस ribbon के अंदर we have a different options, and here I am explaining you this the different UIs, okay? Please try to concentrate. या सौरभ, प्लीज सी हियर, ओके। अगर आपने एक बार भी 5 मिनट के लिए भी ब्रेक ले ली ना, नॉट अंडरस्टैंड, ओके, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अभी तक के लिए आपको कुछ नहीं समझना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू यूज समथिंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। सो कमिंग बैक, सो दिस इज योर होम सेक्शन। सो यू हैव इंसर्ट सेक्शन, मॉडलिंग, राइट, ये सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हम स्लोली सीखेंगे। बट टू गेट स्टार्टेड, यू कैन सी हियर वी हैव डिफरेंट व्यू। व्यू का मतलब क्या है? सो दिस इज योर रिपोर्ट व्यू। सो इस प्लेस के अंदर आप सारे रिपोर्ट्स बनाओगे, इसको हम बोलते हैं रिपोर्ट व्यू, ओके। सो इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्ट व्यू, ओके। सो राइट नाउ बाय डिफॉल्ट जब आप ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट वो रिपोर्ट व्यू में ओपन होता है, एंड दिस इज व्हाट योर रिपोर्ट व्यू इज। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपोर्ट व्यू? जहां पर आप रिपोर्ट्स को बनाओगे, जैसे यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप सम चार्ट्स एंड बिल्ड सम रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके नीचे आप देख सकते हो वी हैव समथिंग कॉल्ड टेबल व्यू, ओके। सो टेबल व्यू, सो टेबल व्यू के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? जो आपने डेटा को लोड किया है, ओके। सो अभी जो मैंने एक सैंपल डेटा देखा, राइट। सो जो मैंने डेटा को लोड किया है टू क्रिएट अ रिपोर्ट, आई कैन सी दैट पर्टिकुलर टेबल इन दैट पर्टिकुलर टेबल व्यू। सो टेबल व्यू के अंदर आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी आई हैव द रो आईडी, ऑर्डर डेट, राइट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, है मेरा सारा डेटा है, एंड दिस इज कॉल्ड टेबल व्यू। इसको हम बोलते हैं टेबल व्यू। सो नेक्स्ट वी हैव अ मॉडल व्यू, ओके। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉडल व्यू?
सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो तीन टेबल्स को डाउनलोड किया है, आई मीन लाइक यू हैव जस्ट इंपोर्टेड टू थ्री टेबल्स, उसका सारा आप स्कीमा डिजाइन देख सकते हो. सो यू हैव लर्न टू स्कीमा डिजाइन इन ईटीएल कॉन्सेप्ट. व्हाट वाज दैट? हमने स्कीमा डिजाइन देखा है स्नोफ्लेक के, सॉरी सीक्वल के भी अंदर देखा है, राइट? माई साइकिला डेटा सेट के अंदर, करेक्ट? ER diagrams, correct? What are two types of schema designs you can actually see in the real world? Star schema या snowflake schema. ओके, हमने ETL टूल के ETL कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ा है. ओके, सो ये इसका मतलब क्या है? सो दिस इज योर जस्ट जो आपने डेटा को लोड किया है उसका टेबल का नाम है ऑर्डर्स, और ये सारे आप कॉलम्स देख सकते हो. राइट नाउ यू कैन सी ओनली दिस ओनली वन टेबल. अगर आपने दो तीन टेबल्स को इधर इंपोर्ट किया है, अब इसका रिलेशनशिप देख सकते हो. जैसे वी हैव ए वन मोर पेमेंट्स टेबल, ये दो टेबल्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से साथ, राइट? सो इवन आई कैन सी दैट पर्टिकुलर डिजाइन हियर, इट्स कॉल्ड मॉडल व्यू. हाँ, रिलेशनशिप, या सो आप रिलेशनशिप बना सकते हो दूसरे टेबल्स के साथ. अगर आपको बनाना है, सो यू नीड टू कम टू योर मॉडल व्यू हियर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड डैक्स व्यू. ओके, सो डैक्स इसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस. सो आगे चल के आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे समथिंग कॉल्ड डैक्स, जहाँ से आप फॉर्मूलाज लिखोगे इन सिंपल टर्म्स टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस और नया कॉलम्स बनाने के लिए. जैसे सिंपल फॉर्मूला, जैसे आपने एक्स लुकअप किया, वी लुकअप किया, सम किया, एवरेज किया, राइट? अब सारे फॉर्मूलाज लिख रहे थे एक्सेल के अंदर. सिमिलरली इन द पावर बीआई अगर आपको कोई भी एक केपीआईज निकालना है, जैसे आपको कोई भी एक एनालिटिकल वैल्यू निकालना है, आप एक्सप्रेशंस लिखोगे, इसको हम बोलते हैं डैक्स एक्सप्रेशंस. सो अगर आपको कोई भी एक डैक्स एक्सप्रेशंस लिखना है, आप आओगे डैक्स के अंदर. ठीक है. And we have something called TMDL view. So TMDL view, it's like more complex. So that I'll tell once we get started with the other topics. ठीक है. So just to summarize, पहला हमारा व्यू था रिपोर्ट व्यू. So जहां से आप रिपोर्ट्स बनाओगे. एंड दूसरा जो व्यू था, इट्स कॉल्ड अ टेबल व्यू. So जहां से आप जो डेटा को लोड किया है उस डेटा आप व्यू कर सकते हो, कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा ओवर हियर. एंड तीसरा जो आपका है, इट्स कॉल्ड मॉडल व्यू. ओके, मॉडल व्यू का मतलब क्या है? आपका स्कीमा डिजाइन देख सकते हो, यू कैन सी द रिलेशनशिप विद द अदर टेबल्स. ठीक है. एंड द थर्ड इज द डैक्स व्यू. डैक्स व्यू का मतलब है आगे चल के आप डैक्स एक्सप्रेशंस लिखोगे. जो जो आपने डैक्स एक्सप्रेशंस लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर, सारे एक्सप्रेशंस आप इधर देख सकते हो, उसको रन भी कर सकते हो, उसको वैलिडेट भी कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द टॉप 4 व्यूज यू शुड अंडरस्टैंड. आई एम पॉजिंग हियर. आई वांट यू टू प्रैक्टिस इट. ओके, प्लीज ओपन द पावर बीआई. पावर बीआई ओपन करो. अगर आपको सैम्पल डेटा चाहिए, सो इन दिस शीट आई हैव ऑलरेडी अटैच दिस डेटा सेट लिंक. इसके अंदर आप एक सैम्पल डेटा देख सकते हो. सो इन दी गूगल शीट मैंने एक ड्राइव क्रिएट किया है, इट्स कॉल्ड पावर बीआई रिसोर्सेज. इसके अंदर आप एक सैम्पल डेटा देख सकते हो, जैसे सैम्पल सुपर स्टोर. इसको डाउनलोड कर लेना एंड ट्राई टू ओपन दैट. और इसको ओपन कैसे करोगे? सो गो टू, जैसे आप इसको ब्लैंक रिपोर्ट क्लिक करोगे, दिस इज व्हाट द पेज विल गेट इट. आपको जाना है गेट डेटा, राइट? एंड एक्सेल वर्कबुक. ओके, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक. एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करो एंड ट्राई टू गेट जहां से आपने डाउनलोड किया है, सेलेक्ट द पाथ एंड उसको आप लोड कर लो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू शुड डू इट. जैसे आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन ओपन. ओके, सो क्लिक ऑन ओपन. सो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको एक नेविगेटर दिखाई देगा जहां से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा टेबल्स को मुझे लेके आना है. ओके, सो हियर आई वांट दिस टाइम ऑल द 3 टेबल, जैसे ऑर्डर्स, पीपल एंड इवन रिटर्न्स. ये 3 टेबल्स मुझे चाहिए. आई क्लिक ऑन लोड. आपको क्लिक करना है लोड. विल डिस्कस दिस ऑप्शंस लेटर. ठीक है. लोड. सो जैसे आप इस पर लोड पे क्लिक करोगे एंड दिस इज इट विल गेट लोडेड. सी, अब ये लोड हो रहा है. सो जैसे आप इस पर लोड करोगे, ट्राई टू प्रैक्टिस इट. प्लीज ओपन दिस टेबल व्यू एंड सी द डिफरेंट डिफरेंट टेबल जो आपने लोड किया है. प्लीज चेक योर क्या मॉडल व्यू जहां से आप रिलेशनशिप देख सकते हो एंड द डैक्स. आपको सिर्फ ओपन करके देखना है. ओके, सो जस्ट ओपन द ब्लैंक रिपोर्ट एंड क्लिक ऑन ऑल दिस ऑप्शन जस्ट टू फील द यूआई. ओके, हाउ दिस इज वर्किंग. ओके, राइट नाउ जैसे आप इसको लोड करोगे डेटा, सी एवरीथिंग गॉट लोडेड. आप डायरेक्टली टेबल व्यू पे जा सकते हो. अगर आप मल्टीपल टेबल्स को डाउनलोड किया है, आई मीन लाइक यू हैव इंस्टॉल्ड इट, यू कैन सी आई कैन नेविगेट टू डिफरेंट डिफरेंट डेटा. जैसे मैंने अभी 3 भी इंपोर्ट किया है. आई कैन सी द ऑर्डर्स. मैं पीपल पे जा सकता हूँ. दिस माई पीपल्स डेटा एंड दिस इज माई रिटर्न्स. ठीक है, आप रिटर्न्स भी देख सकते हो. करेक्ट. सो अगर मुझे मॉडल व्यू जाना है, सी अब मैं 3 टेबल्स भी देख सकता हूँ. अगर इन दोनों के बीच में मुझे कुछ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जैसे आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारी चीजें आगे हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप. बट यू शुड नो व्हाट इज दिस व्यू इज. ओके, जो जो टेबल्स आपने इंपोर्ट किया इसका सारा आप एक रिलेशनशिप देख सकते हो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप? हाउ दिस 2 टेबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. या हितेश, आई शेयर जस्ट अ सेकंड. ठीक है. एंड दिस योर डैक्स व्यू. ओके, जहां से आगे चल के आप डैक्स टॉपिक्स पढ़ोगे, जहां पर आप एक्सप्रेशंस लिखोगे. जो भी आपके एक्सप्रेशंस रहेंगे दैट विल बी व्यूड अंडर योर डैक्स व्यू.
ठीक है, आई एम जस्ट पॉजिंग फॉर 5 मिनट्स, प्लीज प्रैक्टिस दिस। एंड मीन अगर आपको कोई डाउट है जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज लेट मी नो। आई एम शेयरिंग दिस लिंक वंस अगेन। पूजा, इफ यू नॉट गेटिंग दिस, आई थिंक यू आर इन ओल्डर वर्जन। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, मोस्टली आर इन ओल्डर वर्जन। या मे बी आपका जो विंडोज है दैट्स नॉट मैचिंग योर पावर बीआई का वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, तो इसलिए आपको ये सिर्फ ये 3 दिखाई दे रहा है। सो दैट इज द, दैट मे बी द रीजन। अगर नहीं दिख रहा है दैट्स फाइन। ये आप विदाउट, अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते या नहीं बना सकते हो, आप बना सकते हो। दिस जस्ट अ डिफरेंट पैनल्स और द व्यूज आप बोल सकते हो, राइट। सर साइन इन नहीं हो रहा है। हाँ, साइन इन मत करो शुभांगी, आई टोल्ड राइट, डोंट साइन इन, यू जस्ट दिस यू कैन एक्सेस फ्रीली। अगर आपको ये आगे हम पढ़ेंगे पावर बीआई सर्विस, उसके लिए अभी नहीं चाहिए। जस्ट ट्राई टू ओपन योर पावर बीआई डेस्कटॉप एंड ट्राई टू ओपन द डेटा, डाउनलोड डेटा एंड ट्राई टू प्लीज क्लिक एंड व्यू दिस, ओके, हाउ इट्स बीइंग डन। नो नो, डोंट, नाउ यू डोंट इंस्टॉल पूजा, लेटर यू डू इट, ओके, लेटर डू इट। और यू ओपन द पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप कर लेना पूजा, ठीक है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन, करेंटली जो आपका एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो, गो टू योर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड ट्राई टू डू इट, ठीक है। लवप्रीत, हाँ, ये आपका चॉइस है, ये लवप्रीत, आप कोई भी चीज़ जैसे अगर आप ऑर्डर चाहिए जिस क्लिक ऑन ऑर्डर, अगर आपको पीपल का भी चाहिए जिस क्लिक ऑन पीपल। ये आप सीख रहे हो, डू दी मिस्टेक्स, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट फॉलो अलॉन्ग विथ मी, मैं जैसे कर रहा हूँ इसको ही लोड करो, इट्स नॉट लाइक दैट। और आपके पास दूसरा डेटा सेट भी है, ट्राई टू ओपन इट, ठीक है। अगर आपका दूसरा एक्सेल का डेटा है, ट्राई टू ओपन इट, ठीक है। After loading, what to do? Renu, after loading, just try to access this table view, model view, and DAX view. And try to, I hope I have explained it. Just see like what is happening. In that report view, it's completely blank. हमने अभी कुछ report नहीं बनाया है. And this is your table view जहाँ से आप सारे जो tables को load किए उसको access कर सकते हैं, ठीक है। And this is your model view जहाँ से आप सारे जो models हैं, इसको हम model बोल रहे हैं because this is your each and every table. हर एक टेबल का जो भी रिलेशनशिप है दूसरे टेबल से, ये आप बिल्ड कर सकती हो, ओके, इन द मॉडल व्यू। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉडल व्यू इज। ये आपका डैक्स व्यू है, ओके। सो डैक्स व्यू इट्स लाइक राइटिंग ऑल योर एक्सप्रेशंस इन द पावर बीआई, ये सारे एक ही प्लेस में आप लिख सकते हो एंड यू कैन रन इट। सो दिस इज योर डिफरेंट व्यू। अगर आपको रिपोर्ट व्यू में जाना है, जस्ट गो बैक हियर, ओके, आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस पार्ट। हाँ हाँ, अगर आपका लैग हो रहा है, या आई नो लाइक पावर बीआई थोड़ा हैवी टूल है, ओके, इट विल कंज्यूम योर रैम, ओके। अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन है, सो इट विल टेक, दैट्स ओके, इफ इट इज लैगिंग दैट्स फाइन, आप क्लोज करके ओपन कर लेना, ठीक है। गाइस, अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस व्यूज? ये सब क्यों कर रहे हैं? इस्लाम, यू आर आस्किंग ये क्यों कर रहे हैं, लाइक आई डिडंट अंडरस्टूड, क्यों कर रहे हैं इन द सेंस? आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, आप मुझे कि क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या क्यों कर रहे हैं? नेविगेटर में क्या चॉइस करना होगा? नेविगेटर के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म, पहले आप डेटा को सेलेक्ट करो एंड कौन सा टेबल चाहिए उसको टिक करके क्लिक ऑन लोड, दैट्स इट। ओके, हाउ टू लोड वन सेकेंड, ठीक है। अगर आपको डाउट्स आ रहे प्लीज सी हियर, गो टू गेट डेटा। सो गेट डेटा सेक्शंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें स्लोली इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज अगर मैं टेबल व्यू में जा रहा हूँ सारा ब्लैंक है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा व्हाट इज दैट ब्लैंक कॉलम्स इज, राइट। इसलिए आई हैव जस्ट लोडेड सम सैंपल डेटा टू शो इट। अगर आपको भी करना है, जस्ट गो टू योर एक्सेल, पहला ऑप्शन है एक्सेल। आप जैसे ये ओपन होगा आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फाइल का डेटा लेके आना है, जस्ट सेलेक्टेड, क्लिक ऑन ओपन, ओके। आफ्टर दिस, ये नेविगेटर के अंदर ये क्या बता रहा है, कौन सा डेटा मुझे लोड करना है। सो आई वांट विच टेबल, मतलब उस एक्सेल एक्सेल शीट के अंदर अलग अलग टेबल्स प्रेजेंट है। सो मुझे ऑर्डर्स का टेबल चाहिए या मुझे तीनों टेबल चाहिए, उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक ऑन लोड, दैट्स इट। ये लोड हो जाएगा, फाइन। सो दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग, ओके, जस्ट लोड इट एंड सी लाइक द डिफरेंट व्यूज हियर। Shahs Khan, try now. For what option? You're asking for Power BI service, Shahs Khan. What is the main purpose to get from Excel to Power BI? It's not a purpose. See, अगर आपको report बनाना है, मोहम्मद इस्लाम, okay, so if you want to create a report, you want data, right?
उसके लिए डेटा चाहिए, आप डेटा कहाँ से लेके आओगे? सो टू गेट द डेटा यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल। सो एक्सेल से आप डेटा कैसे लेके आ सकते हो पावर बीआई के अंदर टू क्रिएट अ रिपोर्ट। ओके, हाँ, रॉ डेटा या ट्रांसफॉर्म डेटा, कोई भी डेटा हो, अगर आपको रिपोर्ट बनाया तो पहले चीज आपको क्या चाहिए? डेटा, राइट? तो मैं इधर आपको एक दिखा रहा हूँ कि अगर आपको डेटा एक्सेल से लेके आना है, दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है सर, यस यस, आपको भेजू व्हाट शुभांगिनी, क्या भेजो आप? if we want to take the data from SQL, yeah, yeah, I'll show that. See, मैं अभी तक आपको गेट डेटा के बारे में ठीक से नहीं बताया। मैं आपको सिर्फ एक सैम्पल डेटा लोड करने के लिए दिखा रहा हूँ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस डिफरेंट व्यूज। ओके, वाई? बिकॉज आई इवन आई शो इट, अगर मैं इसको लोड नहीं कर रहा हूँ आपको इसमें कोई समझ में नहीं आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल डिलीट एवरीथिंग, आपको ये सारा ब्लैंक दिखाई देगा। ओके, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द ब्लैंक आई वांटेड टू शो सम विद डेटा, तो इसलिए मैं आपको एक सैम्पल डेटा लोड करने के दिखा रहा हूँ टू गेट फ्रॉम एक्सेल। I will discuss all about this, how to get the data from database also in different places also. I'll show it. ठीक है, I'll show that. But I'll just showing for the Excel. Okay, अगर आपको डेटा लेके आना है Power BI के, because we need a data for building reports, right? So if you want to build a reports, I need data. So I'm getting a data from our Excel. एक्सेल फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है। अश्विन, एक्सेल फाइल आपके पास कोई डेटा होगा, राइट? और डाउनलोडेड वॉट एवर द डेटा। अगर डेटा नहीं है, जस्ट ओपन इट एंड सी दिस टैब्स। ओके, इफ यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर टैब्स, और इवन ये सारा आपको ब्लैंक दिखाई देगा, बिकॉज आपके इसमें कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए आपको ये सारा ब्लैंक दिखाई देगा। आई वॉन्ट यू टू जस्ट एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर व्यू ऑप्शंस। या सीक्वल एल शो, ठीक है। कैन एक्सप्लेन दी व्यू, व्यूज। ओके राहुल, सी हियर, व्यूज का इसको हम व्यू बोलते हैं। व्यू का मतलब, इंग्लिश में व्यू का मतलब क्या है? जैसे आप देख रहे हो, राइट? आप राइट नाउ देख रहे हो रिपोर्ट का व्यू, ठीक है? आप जैसे ही इस पर जाओगे टेबल व्यू, आप एक बार देख रहे हो टेबल का सेक्शन जो आपने डेटा को लोड किया है। बिकॉज कई बार ऐसे होगा, जैसे आप इधर रिपोर्ट्स बना रहे हो, अगर आपको डेटा देखना है तो यू विल नॉट गो टू द एक्सेल एंड ओपन द डेटा, आप पावर बीआई से भी देख सकते हो डायरेक्टली। तो कहां पर देखोगे? टेबल व्यू के अंदर, इसको हम बोल रहे हैं व्यू। जस्ट सीइंग, राइट? टेबल व्यू। अगर आपको दूसरे टेबल्स का इसका रिलेशनशिप देखना है, बिकॉज इसमें बहुत रियल वर्ल्ड में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, 50 100 टेबल्स, राइट? अब सारे टेबल्स का रिलेशनशिप देखना है, बिकॉज जब आप कोई भी एक रिपोर्ट बनाओगे, ऑफकोर्स आप 2 3 टेबल से लेके बनाओगे, ठीक है? सो उसका रिलेशनशिप आपको देखना है। सो यू गोना गो टू दी मॉडल व्यू, इसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू। तो इसी रिपोर्ट्स बनाते समय आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस को लिखोगे, ठीक है? उसको हम बोलते हैं डैक्स व्यू। सारे व्यूज जो जो आपने एक्सप्रेशंस लिखा है, ये सारे चीजें आप एक ही प्लेस में देख सकते हो। सो वी हैव ए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हियर। वी हैव ए रिपोर्ट व्यू, वी हैव ए टेबल व्यू, एंड वी हैव ए मॉडल व्यू, एंड वी हैव ए डैक्स व्यू। ये अलग अलग व्यूज है। मतलब अगर आप एक चीज में काम कर रहे हो, अगर आपको डेटा देखना है या इसका रिलेशनशिप देखना है, या इस रिपोर्ट के अंदर जो जो हमने एक्सप्रेशंस लिखा है सारी चीजें देखना है, तो ये सारी चीजें आप इधर देख सकते हो। दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस व्यू इज। गॉट इट राहुल? या प्रिया, इफ यू हैव लोडेड फुल दैट्स फाइन। या राहुल, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट, यू अंडरस्टूड? प्रियांशी डन, ठीक है, ओके। सो प्लीज सेंड सैम्पल डेटा, ओके, बिकॉज सैम्पल डेटा इधर ही प्रेजेंट है, राइट? सो आई एम शेयरिंग दिस शीट वंस अगेन। गाइस, व्हाट अबाउट अदर्स? यू सी, हमने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? बहुत ही बेसिक्स है। आई आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इवन द पीपल हु आर लर्निंग फर्स्ट टाइम। अगर कुछ इश्यूज आ रहा है, लेट मी नो। ओके, बिकॉज ऐसे कई बार होता है कि इफ यू हैव, यू आर प्रो इन समथिंग, ओके, वी हैव यूज दिस टूल्स मल्टीपल टाइम्स। ऐसे भी हो सकता है कि वी हैव अज्यूम्ड इट दैट ओके ये आपको पता है, बट आई एम नॉट गोइंग दैट वे। आपको पता भी नहीं है। इफ यू आर कंप्लीटली नो दिस, आई एम जस्ट टीचिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन हियर। ओके, सो अगर आप उसमें भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है दिस इज समथिंग इज मिसिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेट मी नो, आई एक्सप्लेन इट। ओके, नीरकर बहुत, हाँ हाँ, स्लो ही जाना पड़ेगा। सी, आई नीड टू बैलेंस, ओके? आई नो लाइक वी हैव ए बोथ काइंड ऑफ अ क्राउड, ओके? सो इट्स लाइक वी हैव अ पीपल हु हैव ऑलरेडी लर्नड इट समवेयर, ठीक है? उन्होंने एक्चुअली यूज़ किया है एंड दे वांट टू लर्न सम एडवांस टॉपिक, ठीक है? दे वी हैव दैट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, एंड वी हैव दैट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो हु आर एक्चुअली seeing this Power BI for the first time.
सो एज ए मेंटर और एज ए ट्रेनर जब हम स्टार्ट करेंगे वी हैव द मिक्सड ऑफ बोथ द साइड ऑफ कैंडिडेट्स सो वी आर in a kind of a neutral, okay, so that even the people who are doing it for the first time, okay, so they should understand, and the people who are looking for the advanced topic that will be coming up soon, okay, but if you know it, it's well and good, okay, please you need to understand for the others also, okay, just for the people who are telling me I'm going slow, okay, सी दोनों इफेक्ट करते हैं, अगर मैं फास्ट भी जा रहा हूँ तो इफेक्ट करता है, अगर मैं स्लो भी जा रहा हूँ तो इफेक्ट करता है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। डैक्स में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज हमने अभी कुछ एक्सप्रेशंस नहीं लिखा है, तो आप इधर एक्सप्रेशंस लग के रन कर सकते हो, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, स्लोली लर्न दिस, ओके, मैं आपको यूआई एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, मैं आपको सिर्फ ये टूल को कैसे एक्सेस किया जाता है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, डायरेक्टली मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज यू शुड नो हाउ टू नेविगेट एंड हाउ टू मूव द थिंग्स, यस ठीक है, शैल आई प्रोसीड, ओके, सो राइट नाउ ठीक है, आप मैं बोल रहा हूँ कि टेबल व्यू, तो आपको लेटर जब मैं आगे जाऊंगा देन इफ आई गो टू डायरेक्टली दे शुड नो, अगर मैं सी अगर मैं इधर उधर क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्टली गो हियर, इफ यू आर बिगिनर यू गेट टू नो, आपको डाउट हो गया कहाँ से आ गया, राइट, सो यू शुड नो वे टू नेविगेट, सो दिस योर टेबल व्यू, दिस इज योर मॉडल व्यू, दिस इज योर रिपोर्ट व्यू, ठीक है, ओके, see अगर आपको एक्सेल से ओपन नहीं है दैट्स फाइन, विल डिस्कस अबाउट दैट गेट डेटा सेक्शन, ठीक है, ओके, सो राइट नाउ आई एम इन द होम, ओके, होम के अंदर हम अभी के लिए जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन द गेट डेटा सेक्शन, बिकॉज गेट डेटा सेक्शन इज दैट कंपोनेंट जहां से आप डेटा लेके आ सकते हो, करेक्ट, यू कैन गेट द डेटा, करेक्ट, सो अब मैंने अभी क्या दिखाया था, आई हैव जस्ट टॉट यू हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल, तो क्या एक्सेल एक ही ऑप्शन है, नो, अगर आप गेट डेटा पे जाके इफ यू क्लिक ऑन मोर, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इट्स नॉट वन ऑप्शन, यू विल गेट लॉट मेनी ऑप्शंस, तो आप पावर बीआई के अंदर डेटा कोई भी प्लेस से लेके आ सकते हो, ओके, दे हैव मेनी मेनी कनेक्टर्स, जैसे एक्सेल, सीएसवी डेटा, एक्सएमएल डेटा, ठीक है, और एक मार्कअपिंग लैंग्वेज है, आप एक्सएमएल का फॉर्मेट का डेटा लेके आ सकते हो, जेसन का डेटा लेके आ सकते हो, यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम फोल्डर्स, ये आगे हम स्लोली सीखेंगे, अगर आपका डेटा फोल्डर के अंदर है, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर है, अगर आपको ये सारा डेटा एक साथ लोड करना है, ये स्लोली चीजें हम सीखेंगे, ठीक है, सो वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम फोल्डर्स, वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम पीडीएफ, हाँ पीडीएफ का आई थिंक लाइक दिस जस्ट गेटिंग अ डेटा जिसमें आप कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, इट्स टोटली डिफरेंट, लाइक जब हम बोल रहे हैं पीडीएफ, अगर उस पीडीएफ के अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल देन वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम दैट पीडीएफ, आप डेटा इंटरनेट से भी लेके आ सकते हो जैसे वेब, ओके, वी हैव ए पार्के फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है, जैसे हमारे पास डॉट सी एस वी फाइल है, टेक्सटल फाइल है, तो इसी तरह पार्के एक बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्मेट है जहाँ से आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके आप यू कैन एक्चुअली स्टोर कंप्रेस्ड डेटा इन द पार्के फॉर्मेट, तो रियल वर्ल्ड में बहुत सारा पार्के डेटा भी होता है, सो वी हैव ए पार्के डेटा, सो अब इधर अलग अलग सेक्शंस देख सकते हो, दिस योर ऑल सेक्शन जहाँ से आप बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हो, वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, अगर आपको स्पेसिफिकली डेटाबेस से लेके आना है, जैसे ये सारा सिर्फ डेटाबेस का सेक्शन है, जैसे वी हैव सो मेनी डेटाबेसेस, सी मारिया डीबी, मोंगो डीबी, राइट, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस, अगर मुझे स्नोफ्लेक से लेके आना है सेकंड गेट द डेटा फ्रॉम स्नोफ्लेक, अगर आपको माई सीक्वल से लेके आना है, जैसे आई शो ना हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम माई सीक्वल, ठीक है, बिकॉज मैंने एक्सेल का एक दिखाया, बट आई स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल फर्स्ट, आई शो एक्सेल, आई गो टू फाइल, जैसे मैंने अभी दिखाया, आई क्लिक ऑन एक्सेल, अगर आपको सीएसवी का डेटा लेके आना है जस्ट क्लिक ऑन सीएसवी, सो यू नीड टू क्लिक ऑन एक्सेल, क्लिक ऑन कनेक्ट, अब हम क्या बोल रहे हैं, सो जस्ट गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल, अब ये पूछ रहा है कि एक्सेल का डेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, सो मैंने इस फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो बिफोर ओपनिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन द एक्सेल व्हाट आई हैव, इफ आई गो टू डाउनलोड्स, सो जैसे दिस इज व्हाट आई हैड दिस sample data, let me open this in excel, हाँ, you can see this opening in excel, ठीक है, सो एक्सेल के अंदर आप देख सकते हो वी हैव हाउ मेनी शीट्स, आप एक्सेल के अंदर कितने शीट्स देख रहे हो, प्लीज टेल मी, एक्सेल के अंदर आप कितने शीट्स देख रहे हो, 3 शीट्स, ओके, 3 शीट्स, राइट, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स, एक आपके 3 शीट्स हैं, करेक्ट, सो जो 3 शीट्स, फाइन, ये डाटा मुझे लोड करना है पावर बी, मुझे इसका रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, ऑर्डर्स का एक शीट है, पीपल्स का एक शीट है, रिटर्न्स का एक शीट है, ठीक है, सो आई वांट टू गेट दिस डेटा, आई जस्ट क्लोज दिस नाउ, I'll go to Power BI. So I know like how to get the data from Excel now. So I'll go to get data, Excel workbook. Okay, Excel workbook. So जैसे हम इसको open करेंगे now it will tell like जहाँ कहाँ से मुझे लेके आना है. This is my sample superstore. I click open.
सो जैसे आप ओपन करोगे, सी हर एक का डेटा सोर्स का नेविगेटर थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक्सेल का से डेटा लेके आ रहा हूँ, आई कैन सी द ऑल द शीट्स हियर। सी ऑर्डर, पीपल, रिटर्न। अब इधर सेम चीज देख रही हो, समथिंग कॉल्ड ऑर्डर, पीपल, रिटर्न। आई टेल व्हाई आई एम गेटिंग दिस ट्वाइस, आगे आगे मैं बोलूंगा, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन गेटिंग अ डेटा। ठीक है, सो जैसे अगर आपको देखना है कि ऑर्डर से क्या क्या डेटा प्रेजेंट है, सो आप इधर क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हो। दिस इज योर प्रीव्यू ऑफ योर डेटा। जैसे रो आईडी है, कस्टमर आईडी है, ठीक है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, दिस व्हाट यू कैन सी द प्रीव्यू डेटा। सो फिर आप पीपल पे क्लिक कर सकते हो, कैन सी लाइक व्हाट इज द डेटा इन द पीपल शीट, एंड यू कैन सी द रिटर्न्स टेबल। ठीक है, रिटर्न्स के अंदर क्या क्या डेटा है आप देख सकते हो। अब जो डेटा आपको लेके आना है, इसको आपको टिक करना है। दिस इज योर चेक बॉक्स। मुझे ऑर्डर्स का चाहिए, मुझे पीपल का चाहिए, मुझे रिटर्न्स का चाहिए। ठीक है, सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आई मीन लाइक यू टिक इट, जो जो डेटा आपको चाहिए, एंड क्लिक ऑन लोड। लोड का ऑप्शन क्या है? सो वी हैव ए थ्री डिफरेंट ऑप्शन हियर। लोड ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन जो आगे हम पढ़ेंगे, एंड वी हैव ए कैंसिल ऑप्शन। अगर आपको इसको कैंसिल करना है, जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल। सो राइट नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द लोड पार्ट। लोड क्या करेगा? लोड ये डेटा आपके पावर बीआई के अंदर लोड कर लेगा। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे लोड, सो ऑल द डेटा गेट्स लोडेड इनटू योर पावर बीआई डेस्कटॉप। सो ऑलरेडी मैंने इसको लोड कर लिया है। सो दैट्स व्हाट यू कैन वेरीफाई हियर। अगर आप डेटा व्यू पे, सॉरी टेबल व्यू पे जा रहे हो, आप इधर सेम चीज देख सकते हो, ऑर्डर्स का टेबल, पीपल्स का टेबल, एंड रिटर्न्स का टेबल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट द डेटा फ्रॉम योर Excel. So now I'll show how to get the data from MySQL. So for example, I'll go and create a new blank report. I'll go to the home. Okay, let me click on blank report. So it will open just another report. Here I'll show how to get the data from MySQL. Okay, so let me just close this. So उसके लिए I'll just open this MySQL workbench. Okay, so this is my MySQL workbench. इसके लिए आपको एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो इवन आई शेयर दैट पर्टिकुलर कनेक्टर लिंक ऑल्सो। सो इसको आपको डाउनलोड करना है। आई शेयर दैट लिंक, जस्ट अ सेकेंड। बिकॉज जब आप माई सीक्वल को कनेक्ट करना चाहते हो इन योर लोकल मशीन, इसके लिए आपको एक कनेक्टर चाहिए, एंड दैट कनेक्टर आई एम शेयरिंग, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ पर गया? ओके, फर्स्ट लेट मी जस्ट शो इट, देन आप करो। ठीक है, आई फर्स्ट सी द स्टेप्स। दिस इज माई सीक्वल, एंड दिस इज माई लोकल इंस्टेंस। मेरा यूजर नेम रूट है एंड पासवर्ड भी रूट है। आई जस्ट यू कैन सी यूजर नेम इज रूट एंड माई पासवर्ड इज ऑल्सो रूट। ठीक है, सो माई सीक्वल इज एक्चुअली वर्किंग परफेक्टली। और मुझे इसके अंदर माई सकीला को कनेक्ट करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट द डेटा ऑफ माई सकीला। सो माई सकीला इज माई सैम्पल डेटा जो हम एक्चुअली सीक्वल इसमें प्रैक्टिस किया है, एंड आई वांट टू गेट ऑल दिस टेबल्स। इसके अंदर क्या क्या टेबल्स प्रेजेंट है? सो एक्टर्स का एक्टर कैटेगरी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ टेबल्स। ये डेटा मुझे लेके आना है पावर बीआई के अंदर। आई वांट टू बिल्ड सम रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन दिस। सो व्हाट आई डू, आई गो टू माय पावर बीआई, एंड पावर बीआई के अंदर आई गो टू दी माई सीक्वल सेक्शन। ठीक है, सी
See, abhi empty hai because I don't have anything here. So I'll go to my get data, and so here I'll go to more. So more के अंदर आप MySQL को सर्च कर सकते हो. So here in the databases section you can look for, सी इसमें SQL सर्वर अलग है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू नीड टू गो फॉर माई सीक्वल. सो माई सीक्वल डेटाबेस एंड क्लिक ऑन कनेक्ट. सो जैसे आप इस पर कनेक्ट क्लिक करोगे अब ये सारे कनेक्शन के डिटेल्स पूछेगा. सो फॉर यू पीपल, अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको कनेक्टर चाहिए, यू विल गेट दैट एरर, प्लीज सी दैट एरर. अब ये बोल रहा है कि सर्वर का नाम दो, आई टेल हियर लोकल होस्ट, मेरा बिकॉज ये लोकली चल रहा है. एंड डेटाबेस का नाम मुझे जो कनेक्ट करना है सकीला, ठीक है, सकीला. एंड क्लिक ऑन ओके. सो अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो आपको और एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है. सो वंस यू एंटर द लोकल होस्ट एंड जो डेटाबेस आपको कनेक्ट करना है, ये सारे डिटेल्स आप दे रहे हो. सो जैसे आप इसको दोगे विल गेट अनदर सी दिस काइंड ऑफ नेविगेटर. सी अभी डायरेक्टली कनेक्ट हो गया. इट्स नॉट आस्किंग मी पासवर्ड, एंड बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको मल्टीपल टाइम लोड किया है, फॉर यू इट विल आस्क ओके यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो आपको यूजर नेम देना पड़ेगा, पासवर्ड जो आपने रखा है उसको देना पड़ेगा, क्लिक ऑन कनेक्ट, ठीक है. सो वी हैव ऑल द टेबल्स हियर. अगर मैं इसको सारों को चेक करना, आई वांट दिस कस्टमर लिस्ट, ठीक है, आई वांट दिस कस्टमर रिपोर्ट, ठीक है. सो इवन आई कैन सेलेक्ट दिस, आई वांट दिस फिल्म लिस्ट, आई वांट दिस फिल्म बाय कैटेगरी. मुझे एक्टर्स का टेबल चाहिए, मुझे एड्रेस का टेबल चाहिए, कैटेगरी का टेबल चाहिए, ठीक है, सिटी का टेबल चाहिए. आई वांट कंट्री, आई वांट कस्टमर, आई वांट फिल्म, आई वांट एक्टर, ठीक है. अगर आपको जो जो टेबल्स चाहिए यू कैन सी जस्ट कीप ऑन सेलेक्टिंग. जैसे मैंने इसको सारा सेलेक्ट कर लिया है सम यूज केस, एंड क्लिक ऑन लोड. सी अब इसमें बहुत सारा डेटा है, जस्ट सी द टाइम इट विल टेक, ठीक है. सो बिकॉज ये सर्वर पे चल रहा है, इट्स रनिंग ऑन माई विंडोज मशीन. सो जितना आपका सर्वर अच्छा रहेगा, जितना आपका सर्वर फ्री रहेगा, सो जितना आपका एक स्टोरेज रहेगा, सो इतना अच्छे से काम करेगा, ठीक है. बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूर लोडिंग इट, ठीक है. सी अभी सारा डेटा लोड कर रहा है. सो राइट नाउ आई एम लोडिंग फ्रॉम माई माई सीक्वल, ठीक है. सी ऑल द डेटा इज गेटिंग लोडेड. इट विल टेक सम टाइम, दैट्स व्हाट आई टोल्ड है. अगर आपका सिस्टम अच्छा है इट विल लोड फास्टर. अगर आपका सिस्टम स्लो है सो इट विल टेक सम टाइम फॉर लोडिंग. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर, आई मीन लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर आपने पावर बी आई सर्वर को इंस्टॉल किया है, सॉरी पावर बी आई डेस्कटॉप को इंस्टॉल किया है, ठीक है. सो राइट नाउ इट्स लोडिंग, लेट मी जस्ट, सो हाउ मेनी आर ट्राइंग, please go and try, let me know what error you're getting. Are you getting the connector error? So who want to do it, okay, अगर आपको practice करना है how to get the data from MySQL. Sarthak, that's what I showed now, right? How to get the data from MySQL. Connector error, right? हाँ. So I'll share that connector. Okay, let me just come back. See, अभी सारा data load हो चुका है. So how I can verify? I can go to my directly model view. So model views, I can just see my different tables. See, so this is what the purpose of the model view. So अभी सारे tables देख सकते हो और इसके सारे आप relations भी देख सकते हो. See, इसका मतलब क्या है? I'll tell what is this one star ये सारी चीजें, but you can see some sort of a lines that is being connected to different tables. See, Sakila, Sakila film actor, ठीक है, Sakila film actor, this is your another table, ठीक है. एंड दिस इज योर Sakila actor. ये सारे दिस योर टेबल व्यू, मतलब जहाँ से आप एक सारे कॉलम्स का भी देख सकते हो, कॉलम का इन्फॉर्मेशन, एंड इवन यू कैन सी हाउ दिस टेबल इज कनेक्टेड टू सम अदर टेबल, ठीक है. एंड आप टेबल व्यू पे जाके सारा डेटा भी एक्सेस कर सकते हो. सो नाउ इफ आई गो टू माई Sakila कस्टमर, सो मेरा Sakila कस्टमर का डेटा मैं राइट नाउ देख रहा हूँ. सी, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, सारा मेरा कस्टमर का डेटा है. सो अगर मुझे फिल्म का डेटा चाहिए, सो दिस इज माई फिल्म डेटा, सो आई कैन सी ऑल माई फिल्म डेटा. Okay, I can go back to my report view, so I can start building a report over here, ठीक है. So this is how you get the data. Okay, अब जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है प्लीज ट्राई टू डू इट, आई गिव 5 minutes. एंड जिन लोगों को कनेक्टर का इशू आ रहा है आई शो लाइक हाउ टू फिक्स दैट, ठीक है. आई शेयर सम कनेक्टर लिंक, जस्ट अ सेकेंड. अभी मैंने इधर स्टोर किया था, आई डोंट नो वेयर इट वेंट. आई शेयर इट, जस्ट अ सेकेंड. कनेक्टर इशू, राइट? हाँ, you'll get the connector issue, I know. I think, okay, let me just share the link. Okay, एक second. हाँ, आई नो यू विल गेट कनेक्टेड, आई वॉन्ट यू टू सी द कनेक्टर इशू. इसका मतलब क्या है? पावर बी आई और लोकल मशीन सेटअप के लिए एक ब्रिज चाहिए, ओके, द कनेक्टर. वो कनेक्टर इंस्टॉल नहीं हो तो आपको एरर मिलता है. आई शेयर द लिंक नाउ, जस्ट सेकेंड.
So dev dot my. I'll share the link, एक second. Even I'll paste, yeah, I'll paste in Google Sheet also. हाँ ठीक है, आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड एंड रन इट. फिर रन करने के बाद क्लोज द पावर बी आई एंड ओपन इट, एंड आई थिंक दैट टाइम इट शुड वर्क. फाइन, आई हैव शेयर्ड दिस लिंक एंड इवन आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस लिंक इन शीट ऑल्सो. अगर आपको शीट से एक्सेस करना है, यू कैन एक्सेस दी लिंक फ्रॉम हियर. इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड इट, रन इट, दैट्स इट. डाउनलोड दिस पर्टिकुलर, कहाँ से डाउनलोड करना है, दिस इज योर डाउनलोड सी, डाउनलोड डायरेक्टली. आपको एक रजिस्टर का पेज आएगा, डोंट रजिस्टर इट. अब नीचे आपको मिलेगा नो थैंक्स डाउनलोड. डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर लो एंड डू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दैट्स इट. ओके, इसको इंस्टॉल करने के बाद क्लोज योर पावर बी आई, ओपन योर पावर बी आई वंस अगेन, एंड just load the data. Just a normal step. Go to your get data, MySQL, enter your username, password, and connect it. ठीक है. हाँ, आई नो सागर. मैक में कुछ ऑप्शन है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, राइट. दैट्स ओके. आप, आई नो लाइक मैक का ऑप्शन है, जस्ट सी इट, ठीक है. सी इट एंड जस्ट सी, लाइक अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, ऐसे कोई, इफ एनीवन कैन गिव द लैपटॉप फॉर 1 or 2 days, देन यू कैन प्रैक्टिस इट. आई थिंक अंशल सागर दे आर यूजिंग मैक्स, मैकबुक. यही ड्रॉबैक होता है इफ़ यू आर यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बट कुछ नहीं, दैट्स ओके. सो आप, अगर आपको क्लाउड के बारे में पता है, जस्ट आप एक विंडोज़ मशीन क्रिएट करो, ठीक है. इफ़ यू हैव एन ऑप्शन टू, जैसे वी एम के मदद से आप विंडोज़ मशीन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट दैट थिंग यू शुड चेक इट, ओके, अगर आपको करना है तो, ठीक है. या वैसे इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल हियर, यू हैव लर्न टू टू थिंग्स. गेट द डेटा. गेट द डेटा का मतलब क्या है, अगर आपको डेटा लेके आना है, आई हैव जस्ट शो टू मेथड्स, एक्सेल या माई डेटाबेस. अगर आपको सीवीएसई से लेके आना है, यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम वेब ऑल्सो. आई शो दिस स्लोली, जैसे हम आगे पढ़ेंगे. हम डेटा क्लीनिंग के लिए विल गेट द डेटा फ्रॉम वेब ऑल्सो, ठीक है. वी गोना लर्न मेनी थिंग्स, बट राइट नाउ यू शुड नो हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम दिस प्लेसेस. ठीक है. या व्हाट हैपेंड, हाउ मेनी आर ट्राइड इट, कैन रिपीट, क्या रिपीट करना है, हाउ टू, ठीक है. ओके, सी फॉर श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके पास कनेक्टर नहीं रहेगा फॉर द माई सीक्वल. Okay, so for those people, what they need to do it, go to this particular website. ये आपको कॉपी करना है. आई मीन लाइक आई शेयर दिस इन चैट, इन शीट. आपको क्लिक करना है डाउनलोड. अब ये डाउनलोड क्लिक हो जाएगा. डाउनलोड होने के बाद सर आपको करना है रन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, डन. आपको क्लोज करना है पावर बीआई, अगर आपने ओपन किया है तो फिर दोबारा पावर बीआई ओपन करो. गो टू योर गेट डेटा. आई इवन क्लोज इट, ठीक है, आई शो फ्रॉम स्टार्ट. ठीक है. सो आई गो हियर पावर बीआई, पावर बीआई. रेनू जस्ट वॉच इट हियर, आई शो. ठीक है. रेनू, wait wait, I know like what option you're asking. I'll show it, ठीक है. Okay, so जैसे आप Power BI open करोगे, so here you'll get two options. Sorry, here you'll get data option. So जहाँ से आप MySQL को connect कर सकते हो, ठीक है. So I'm just connecting now. So it will open. So from here, कहाँ पर जाना है, home. You'll get blank report. I click on blank report. एंड ब्लैंक रिपोर्ट से आपको जाना है गेट डेटा, जहाँ से आप डेटा लेके आ सकते हो. वाई, बिकॉज आई नीड टू बिल्ड अ रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स. सो it will take time, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर. हाँ. सो आई गो हियर एंड क्लिक ऑन मोर, बिकॉज राइटली आपको इधर माई सीक्वल का नहीं दिखा है. सीक्वल सर्वर अलग है.
सी सीक्वल सर्वर वो अलग है, ठीक है। माई सीक्वल एंड सीक्वल सर्वर अलग अलग है। सीक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, माई सीक्वल अलग है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई स्ट्रेस्ड इट, बिकॉज कई लोगों को दोनों सेम लगता है। सीक्वल सर्वर अलग है, माई सीक्वल अलग है, ठीक है। सो डेटाबेस पे जाना है एंड आपको क्लिक करना है माई सीक्वल। सो यू कैन सी माई सीक्वल डेटाबेस, इस पे आपको क्लिक करना है। आई एम गोइंग स्लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने कैन डू इट। ओके, सो माई सीक्वल एंड क्लिक ऑन कनेक्ट। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको दो चीज़ें देना पड़ेगा। वन इज़ योर कनेक्शन होस्ट, मतलब ये कहाँ पर चल रहा है। कई बार क्या होता है, अगर आप एक क्लाउड में रन कर रहे हो तो आपको एक कंप्लीटली होस्ट मिलेगा, आपको इधर पेस्ट करना है। बट राइट नाउ इट्स रनिंग ऑन माई लोकल मशीन, तो आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। ओके, आपको क्या टाइप करना है, लोकल होस्ट। ठीक है। सो जैसे आप इस पे लोकल होस्ट पे क्लिक करोगे, ओके लोकल होस्ट। सो लोकल होस्ट के बाद आपको इधर देना है कि कौन सा डेटाबेस को मुझे कनेक्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ सकीला, ठीक है। एडवांस ऑप्शंस पे जाओ, एडवांस ऑप्शंस के अंदर इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ओके, इधर नहीं दिखा रहा है मेरा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने मल्टीपल टाइम क्रिएट किया इसलिए मेरा डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। अगर आपको और एक ऑप्शन दिखा दे रहा है जहां से आपको इधर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, कैन यू टेल मी लाइक जहां पर लोगों ने स्ट्रक, मतलब इफ यू समवन हैज गॉट स्ट्रक आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप, दो ऑप्शन दिखाई देंगे, विंडोज एंड वन मोर इज समथिंग, ओके, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट ऑप्शन। हाँ, डेटाबेस, यस सृष्टि, क्लिक ऑन डेटाबेस, हाँ, क्लिक ऑन डेटाबेस। हाँ आई नो, हाँ। सो विंडोज और डेटाबेस के बीच में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्लिक ऑन क्लिक ऑन डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर आपको मेंशन करना है कि यूजर क्या है, रूट, एंड डेट एंड पासवर्ड क्या है, रूट। ओके, अगर आपका जो पासवर्ड है जस्ट ट्राई टू ऐड दैट। आपको सेलेक्ट करना है डेटाबेस। ओके, दो ऑप्शन दिखाई देगा, विंडोज एंड डेटाबेस। इन द साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, गो टू योर डेटाबेस। फिर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, यूजर नेम, पासवर्ड। एंटर योर यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्लिक ऑन कनेक्ट, एंड यू कैन सी दिस ऑप्शंस। डन, रेनू, साक्षी, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? समझ में आ रहा है, लाइक व्हाट, सी आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग, राइट? यस, ठीक है। बाद में फिर मत बोलो लाइक कुछ समझ में नहीं आया, इट्स इज नॉट हैपनिंग। ओके, बहुत ही इजी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग लाइक बहुत ही आगे हम कॉम्प्लेक्स चीजें जब जाएंगे, यू शुड नॉट फील दैट, ओके, सो व्हाई इट्स लुकिंग सो कॉम्प्लेक्स, ओके, प्लीज प्रैक्टिस, ठीक है। Credentials, yeah, Sayan, just select the database. You can see on the left hand side, we have two options. Select the windows and enter your username and password. And either you just select it, okay? So मुझे actors का table चाहिए, address, just for the practice, okay? Address, categories, Sakila city, country, customer, film, this and this. And click on load. जैसे आप इस पे load click करोगे, now the data gets loaded and you can access from this particular thing. प्रियदर्शनी, व्हाट, क्या इशू आ रहा है इंस्टॉल करने के बाद? आप क्लोज कर लेना प्रियदर्शनी, ओके प्लीज, हैव यू क्लोज्ड इट? सी कई बार विंडोज को रीस्टार्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर विंडोज मशीन। कई बार विदाउट रीस्टार्टिंग ऑल्सो, जैसे आपने एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर प्लीज ट्राई टू ओपन इट, क्लोज किया था। क्या एरर दे रहा है प्रियदर्शनी, कैन यू शेयर मी हियर? या सचिन, सो डिपेंडिंग अपॉन, सो कई बार क्या होता है सचिन, सो बाय डिफॉल्ट कनेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इफ सम, सी कनेक्टर्स की जरूरत जब भी पड़ते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट फ्रॉम लोकल मशीन। अगर आप कोई भी एक सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, सो ऑटोमेटिकली दैट्स गेट कनेक्टेड योर क्लाउड सर्वर्स, मतलब क्लाउड माई सीक्वल, क्लाउड सीक्वल सर्वर, क्लाउड और ओरेकल, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। बट कनेक्टर के इश्यूज आपको आते हैं जब आपका लोकल सेटअप में है, जैसे अगर आप लोकल मशीन का माई सीक्वल या लोकल मशीन का पोस्टग्रेस कर रहे हो, देन यू नीड अ स्पेसिफिक कनेक्टर। तो आप ये दो चीज़ें कर सकते हो, वन इज कॉल्ड ओडीबीसी, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, बहुत सारा स्टेप्स करना पड़ता है। ये ईजिएस्ट स्टेप है, कनेक्टर को इंस्टॉल कर लो, फिर रीस्टार्ट करो, देन ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम इज सॉल्व। दूसरा ऑप्शन भी है, समथिंग कॉल्ड ओडीबीसी ऑप्शन, वो थोड़ा अलग वे से करते हैं, दैट्स मोर डिफिकल्ट प्रोसेस। आपको ओडीबीसी कनेक्टर डाउनलोड करना है, आपको बहुत सारे सेटिंग्स करना है, ओके, जस्ट दर एक्स्ट्रा हेडेक, सो दिस अ बेटर ऑप्शन, ओके, टू कनेक्ट टू योर लोकल लोकल सेटअप्स। कनेक्टर प्रॉब्लम, प्रियदर्शन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी, ठीक है, आई जस्ट चेक इट, ओके। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो, आई चेक इट।
फाइन ओके सो टिल हियर एनी डाउट्स ओके अभी के लिए आपको ए रिबन दिस कॉल्ड रिबन एंड दिस इज योर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट व्यूज विच यू हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट इफ इट इज गुड देन आई प्रोसीड टू नेक्स्ट वन ठीक है शैल आई गो टू नेक्स्ट वन ओके प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ अभी जो नेक्स्ट आप देख सकते हो यू कैन सी द थ्री पेन हियर इसको हम बोलते हैं पेन्स ओके सो दिस इज कॉल्ड ठीक है विल गेट सम टाइम ओके सो ट्राई इट ओके अभी द तीन पेन्स देख सकते हो सो वन इज कॉल्ड डेटा पेन विजुअलाइजेशन पेन एंड फिल्टर पेन इसको हम बोलते हैं पेन्स ओके सो पहला आपको जो डेटा पेन है ओके सो डेटा सेक्शन के अंदर ओके सो इस पैनल के अंदर आप देख सकते हो जो जो आपने डेटा को लोड किया है ये सारे टेबल्स का नाम और उसके कॉलम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे फॉर एग्जांपल आई एक्सपैंड दिस कैटेगरी या जैसे मैंने इधर एक्टर का टेबल है दिस योर एक्टर का टेबल का नाम और जैसे आप इस पर एक्सपैंड करोगे आप इसके कॉलम्स देख सकते हो सो एक्टर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट डेट अगर आपको दूसरा टेबल देखना है यू एक्सपैंडेड आप ये सारा एड्रेस का टेबल देख रहे हो सो वी हैव एड्रेस आईडी टू सिटी आईडी डिस्टेंट लोकेशन फोन पोस्टल कोड ठीक है नेक्स्ट वी हैव ए सकीला कैटेगरी वी हैव ए कैटेगरी आईडी लास्ट अपडेट नेम ठीक है सो इवन वी हैव दिस काइंड ऑफ एन ऑप्शन मतलब जहां से आप सारे अपार्ट फ्रॉम टेबल व्यू आप इधर से भी क्विकली देख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉलम्स यू हैव फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टेबल ठीक है नेक्स्ट इज योर विजुअलाइजेशन व्यू विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सारा पावर बीआई का जो भी मेन कंपोनेंट है जो हम जहाँ से हम डेटा को मतलब रिपोर्ट्स बना रहे हैं इट्स कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन कॉल्ड विजुअलाइजेशंस या लवप्रीत अगर आपको ओरेकल को कनेक्ट करना है आपको ओरेकल का कनेक्टर इंस्टॉल करना है देन यू ट्राई विथ ओरेकल ठीक है सो विजुअलाइजेशंस तो आप इधर देख सकते हो वी हैव ए डिफरेंट विजुअलाइजेशंस ऑप्शंस मतलब ये अलग अलग चार्ट्स है इवन आई हैव मेड वन वेरी गुड पीपीटी मैं आगे आपको शेयर करूंगा ठीक है इन मे बी नेक्स्ट क्लासेस तो जहाँ से आई एक्सप्लेन लाइक व्हेन टू यूज व्हाट चार्ट्स ठीक है सो वी हैव ए बार चार्ट वी हैव ए डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स कॉलम चार्ट्स सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है सो टू सी मतलब फॉर एनी और दिस कॉलम्स अगर मुझे कोई भी चार्ट बनाना है सो आई कैन एक्सेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन हाउ टू डू इट आई शो ठीक है एंड द थर्ड पेन और द थर्ड पैनल जो आपका है इट्स कॉल्ड फिल्टर्स अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है ओके या अगर आपको चार्ट्स को फिल्टर करना है आप फिल्टर के ऑप्शंस को यूज कर सकते हो सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ओके वन वी हैव ए डेटा सेक्शंस एंड वी हैव ए विजुअलाइजेशन सेक्शन एंड वी हैव ए फिल्टर सेक्शन जहां से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो ठीक है सो कमिंग बैक टू योर होम सो होम के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होना है वन इज ऑल अबाउट योर व्यूज सो डिपेंडिंग अपॉन द व्यूज जो आपको एक्सेस करना है यू कैन एक्सेस इट एंड जब आप क्रिएट करोगे रिपोर्ट्स को यू गोना यूज दिस थ्री सेक्शंस most of the time, right? So one is your data, one is your visualization, and one is your filter. This is how you open and close it. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओके जैसे अगर आपको फिल्टर एक्सेस नहीं करना है यूज़ नहीं करना है जस्ट ट्राई टू क्लोज इट सो दैट आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है जस्ट टू वर्क अराउंड योर रिपोर्ट्स ठीक है एंड द नेक्स्ट बिलो यू कैन सी सिमिलर टू योर एक्सेल शीट जैसे पेज वन सो राइट नाउ आई क्रिएटेड दिस बाय डिफॉल्ट पेज वन अगर आपको मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आप इधर क्लिक कर सकते हो जैसे प्लस तो जैसे आप इस पर प्लेस पे क्लिक करोगे सो नाउ यू कैन सी ऑल डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आप इसको एडिट कैसे करोगे डबल क्लिक ओके या राइट क्लिक सो डबल क्लिक आई विल से हियर दिस इज माय रिपोर्ट वन ठीक है सो रिपोर्ट वन एंटर जो इसे उसको मुझे रिप्लेस करना है रिपोर्ट टू ठीक है सो आई विल से हियर दिस इज माय रिपोर्ट टू ओके अगर मुझे इसको डिलीट करना है सो डायरेक्टली वी हैव दिस क्रॉस मार्क डिलीटेड ओके डिलीट एफ डिलीट हो जाएगा सो टू लास्ट परमिशन यस डिलीटेड सी सो दिस इज योर एडिंग योर मल्टीपल पेजेस एंड दिस हाउ यू डिलीट इट अगर आपको कोई भी चीज एडिट करना है मतलब राइट क्लिक एवरी टाइम सो राइट क्लिक डुप्लीकेट बनाना है जैसे अगर आपको एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को डुप्लीकेट बनाना है डुप्लीकेटेड अगर आपको रीनेम करना है डिलीट करना है या हाइड करना है या आपको इसको मूव करना है डिफरेंट लोकेशन के अंदर यू कैन एक्चुअली डू इट एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर होम सेक्शन या दिस इज द प्लेस जहां से आप रिपोर्ट्स बनाओगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इधर नेविगेशन पता होना है एंड वन थिंग यू शुड नो हियर इज गेट डेटा गाइस एनी डाउट्स इन दिस ये आप कैसे करोगे विल लर्न स्लोली नो डाउट ठीक है यस ओके नाउ आई शो यू द क्विक स्टार्ट मतलब एक काइंड ऑफ अ रफ काइंड ऑफ एन हैंड्स ऑन मतलब जब आपको पास डेटा आ गया ठीक है सो अब इसको आप कैसे मतलब हाउ यू गोना प्ले अराउंड दिस ठीक है सो फॉर एग्जांपल आई गो टू दी ऑर्डर्स ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए टू टाइप्स ऑफ सेटअप्स सो वन इज वी नीड अ ब्रेक ठीक है ओके ओके वी डिडंट विल टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स ओके सो ऑलमोस्ट 2 hours we did it विल टेक अ 10 minutes ब्रेक ठीक है ओके आप जब तक जो भी इश्यूज है जस्ट ट्राई टू मेक इट डाउन एंड सी अगर आपको कोई भी डाउट्स है गाइस ट्रस्ट मी आई एम गोना हेल्प इट
अगर आपको पिछला वाला टॉपिक्स में कोई इश्यूज आ रहा है, यू जस्ट ट्राई टू सेंड मी अ मेल. If it is possible, even I can try to connect it, okay, for 5-10 minutes or explain the concept. Okay, अगर आपको MySQL के अंदर कोई doubts है, you didn't understood the joins, you just send me a request, sir. I didn't understood the joins. Even after watching a recording, even after watching some references या blogs, मुझे ये सारा पढ़ने के बाद भी अगर मुझे समझ में नहीं आए, can you help it out? Just explain this particular topic. I'll make a way and I'll explain it. ठीक है. ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई भी डाउट है, आई हेल्प इट. ओके, आई एम वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली. ओके, आई एम एक्चुअली नॉट दैट पर्सन, ओके, जहाँ पर इफ समवन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ डाउट एंड आई कैन नॉट मूव अहेड बिकॉज इफ सम स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से लाइक सम, it's like entire participants have joined my session to attend it. Okay, it's for everyone. Okay, अगर आपको कोई भी डाउट है, okay, so there are few constraints also because बहुत सारे participants हैं, so maybe some reasons, सारे ही out of, if you have some people of 50 or 60 group, I can't expect that सारे 60 को भी समझ में आ जाएगा because some people will not be understanding because this is similar to your school and colleges. ठीक है, colleges के अंदर you never expect that, okay, आपके जो भी 100 के जो भी students हैं, all the hundreds are concentrated and all the 100 students are actually attentive and they have done everything. So I'm not expecting that kind of also. There could be exceptions, yeah, 5 or 6 students who are not at all understood anything, okay, even after watching or any sort of help. Always reach out, ठीक है. In the weekdays, so जब भी मुझे time मिल रहा है, I can arrange some sort of a meet and explain it, ठीक है. You can just send me to that mail ID, okay. I can just schedule some sort of meet for 10-15 minutes and explain it, and whatever the best ways I can do it to explain or clarify your goals, I'll do it, ठीक है. Is anything I can, any other suggestion you can give it so that I can implement? See, I have just opened it because in a few of my batches, I've never talked about the email part. Then when I started integrating the email thing, I got a lot of queries. I tried solving it. So now even I'm trying this way. अगर आपको ऐसे कुछ issues है, okay, so in some concepts, you try to send it. We'll have some sort of a meet of 10-15 minutes to explain certain things. I'll explain it. I don't have any issues at all. ठीक है. सो आई हैव गिवन ऑल द डिफरेंट वेज, ओके, आई हैव ओपनड ऑल द वेज. अगर आपको इसमें कोई सजेशन देना है, ठीक है, सर, दिस इज ऑल्सो यू कैन डू इट, ओके, सो दैट या मुझे इसमें डाउट्स आ रहा है बिकॉज फॉर मी एवरी वन इज इंपॉर्टेंट. Okay, so everyone, I want everyone to get through it, okay, and get the very good jobs, okay, have placed in very good companies, okay. Even my motive is that I hope even you have the same motive. So when we have the same motive, okay, it should not have some sort of I mean like ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, not miss. Um, okay, I'm not exactly getting that word. ठीक है, so let's take a 10 minutes break, and after the break, we'll start from here. ठीक है, okay. Connectors, SQL सर्वर, सार्थक आई कैन एक्सप्लेन SQL सर्वर. हम लास्ट 15 मिनट्स करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट देयर. अगर मैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, सो इट इज़ लाइक समथिंग विच अगेन पीपल विल स्ट्रगल. आई थिंक मेरे पास माई सीक्वल नहीं है. अगर आपको चाहिए, आई डू इट, ओके, आई डोंट हैव, आई डोंट नो, आई कैन डू इट, ओके. मेरे पास सिर्फ पोस्टग्रेस प्रेजेंट, आई थिंक माई सीक्वल नहीं है. आई नीड टू इंस्टॉल दैट, आई नीड टू डू दिस सेटअप. अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई थिंक यू कैन फॉलो द सेम स्टेप्स. इसमें कोई नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपरली कनेक्शन सेटिंग्स देना पड़ेगा. जैसे आप इसको दोगे, हैव दी पेड इट. फाइन, ओके, विल टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक नाउ. सो विग्नेश, कनेक्टर का इशू आ रहा है, दैट्स ओके, ट्राई इट, ओके. सो सी, कनेक्टर का इशू नहीं आना चाहिए बिकॉज इट्स द सेम थिंग जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ. इवन इट शुड वर्क इन योर सिस्टम बिकॉज इसमें कोई भी सेटिंग्स नहीं है. आपको सिर्फ रन करना है. सी, आई हैव इंस्टॉल्ड इट जस्ट नाउ इट सेल्फ बिफोर द क्लास. मेरे में भी इशू आ रहा था because I need a connector. So I've installed it, run it. Now it's absolutely working fine. Okay, so it should actually should not disturb your any sort of like, इसमें कोई अलग settings नहीं है. अगर मेरे में चल रहा है तो आपके इसमें भी चलना चाहिए, ठीक है. Only thing which you should be very careful is close the Power BI and restart it multiple times. Make sure you've installed it properly. Okay. Sir, why could not attend the, um, have you selected the database, Mohammed Islam? Like, have you selected the database section have entered properly? बिकॉज आपको लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डेटाबेस एंड विंडोज. गो विथ डेटाबेस, एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. यूजर नेम पासवर्ड अगर सही हो तो देन इट विल ट्राई टू कनेक्ट. मेक श्योर ओपन योर माई सीक्वल. आप थोड़ा माई सीक्वल भी ओपन कर लो, कई बार सर्वर अगर शट डाउन है तो इट विल नॉट एबल टू कनेक्टेड. ओके, द पीपल हु टोल्ड नॉट एबल टू कनेक्ट, एक बार इस तरीके से भी ट्राई कर लो. जस्ट ट्राई टू ओपन योर माई सीक्वल सर्वर वर्क बेंच
and try to log in and be active in the MySQL. Open it. Okay, open it and try to connect it. Okay. Okay. Fine. So I think we'll take 10 minutes break. Then
ठीक है। ठीक है, सो विल स्टार्ट। एरर आ रहा है या राज्य, सो एरर जो आ रहा है इट शुड कम विथ। एक सेकंड। ठीक है, सी वॉट एवर द एरर्स यू आर गेटिंग, एक बार मुझे मेल करो, आई जस्ट चेक इट, ठीक है। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द एग्जैक्ट स्टेप जैसे हम कर रहे हैं, इसमें एक्सेप्शंस कोई आ रहा है, मतलब इफ यू नॉट गेटिंग द सेम वे, अगर जैसे हम कर रहे हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है, जस्ट सेंड मी अ मेल, आई नीड टू चेक, ठीक है। बट अगर आप एक्चुअली इट शुड वर्क, सो जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं, इफ इट इज़ अ प्रॉपर स्टेप्स, एक्चुअली जस्ट टेस्टेड मेथड, मतलब इट शुड वर्क, ओके। अगर काम नहीं कर रहा है तो मे बी सम इश्यूज, ठीक है। गायत्री, I've just loaded the sample data. It's not that specifically आपको वही लोड करना है, just here you're just seeing like how to load different tables, that's it. मैंने ये सारे टेबल्स को लोड किया, कैन सी हियर, अगर आपको सेम टेबल चाहिए, सो हियर वी हैव एक्टर्स, एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, फिल्म, फिल्म एक्टर, फिल्म कैटेगरी, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो इफ आई जस्ट गो बैक टू दी
Slides. Okay, so connect data. So we can connect the data in the Power BI, right? हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो आई जस्ट शो दिस ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है. फाइन. सो आई डू इस आई मगर हम स्पेसिफिकली इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, बट आई शो लाइक व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म, बिकॉज जब आप डेटा को एक्सेल से लोड कर रहे थे, सो इवन वी हैव द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन. आई शो दैट व्हाट इज द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन नाउ. आई ओपन फ्रॉम स्क्रैच. मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूँ सो दैट यू विल प्रैक्टिस. ठीक है, सो आई ओपन पावर बीआई वंस अगेन. Okay, I'll go to blank report. No, no, that's okay, Gayatri. You can ask me. It's not, it's man. But it's just a practice, okay? You can open whatever the data you want. Okay, so get data. So Excel workbook, sample superstore. ठीक है, सो टिल हियर इट्स सेम, राइट? अगर आपको डेटा लोड करना है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोड? यू आर टेलिंग दैट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द डेटा इन द पावर बीआई. ठीक है, एंड ये सारा डेटा पावर बीआई के अंदर स्टोर होता है, एंड यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन दैट. भाई इसका मतलब है लोड. यू आर लोडिंग द डेटा टू योर पावर बीआई डेस्कटॉप. अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? या टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब मुझे लोड नहीं करना है, मुझे लोड करने से पहले इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है. आई वांट टू मेक सम चेंजेस. व्हाट चेंजेस? मुझे आई वांट टू चेंज द डेटा टाइप्स, मुझे ट्रिम करना है. ठीक है, आई वांट टू डू द कंकैटिनेशन, या मुझे नए कॉलम्स, डिराइव्ड कॉलम्स बनाने हैं, बेसिकली द क्लीनिंग पार्ट, राइट? तो आई कैन डू द क्लीनिंग पार्ट यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म बटन. अब मैं डायरेक्टली लोड नहीं क्लिक कर रहा हूँ. ओके, से डायरेक्टली आई एम क्लिकिंग द ट्रांसफॉर्म डेटा. सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इट विल ओपन योर न्यू एडिटर. इट्स कॉल्ड पावर क्वेरी. अब ये क्या ओपन हो रहा है? पावर क्वेरी ओपन हो रहा है. सी, दिस इज योर पावर क्वेरी. सो इट्स कॉल्ड पावर क्वेरी एडिटर, जहां से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सो दिस लाइक इंट्रो पार्ट. ठीक है, ये स्पेसिफिकली हम इस टूल को अलग से पढ़ेंगे इन डिफरेंट सेशन, बट हियर आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म. सो जब आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे, इट विल ओपन दिस इन सम न्यू टैब, राइट? सॉरी, इन द न्यू न्यू पेज इट सेल्फ, राइट? जहां से आप इस पावर क्वेरी को एक्सेस कर सकते हो. सी, दिस इज योर न्यू पेज इट सेल्फ, राइट? सो यू कैन सी पावर क्वेरी, राइट? ये आपका अलग विंडो है. So you can see this is your power query, and same thing you can see all these columns जो आप Excel में जो columns देख रहे थे, जैसे row ID, order ID, right? So we have so many options here. ये अब हम आगे पढ़ेंगे. But once this is done, अब मेरा for example सोचो like I have done all the transformations, my transformations is done. अब मैं क्या करूँगा? I'll click on close and apply. So जैसे आप इस पे close and apply करोगे, अब डेटा क्या होगा? इसमें जो हम ट्रांसफॉर्म किया है वो सारे चेंजेस मेरे Power BI डेस्कटॉप के अंदर लोड हो जाएंगे. नाउ आफ्टर डूइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल गो बैक टू योर Power BI डेस्कटॉप. अभी जैसे आप इस पर क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करोगे, जैसे क्लोज एंड अप्लाई, व्हाट इज इसका मतलब क्या है? जो आपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसको मैंने अप्लाई कर दिया है, एंड नाउ दैट डेटा इज गेटिंग लोडेड इनटू योर पावर बीआई डेस्कटॉप. इट्स लाइक अ वाया. ओके, अब डायरेक्टली लोड नहीं करना है मुझे, मुझे कुछ ट्रांसफॉर्म करके देन आई वांट टू गेट बैक द डेटा टू योर पावर बीआई डेस्कटॉप. तो आप इस तरीके से करोगे. ठीक है, सो व्हाट इज द लोड ऑप्शन? सो लोड ऑप्शन विल डायरेक्टली लोड योर डेटा टू योर पावर बीआई डेस्कटॉप. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्म ऑप्शन. अगर आपको लोड डायरेक्टली नहीं करना है, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है. इसका मतलब क्या? अगर आपको डेटा को क्लीन करना है बिफोर लोडिंग, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, इट विल ओपन द पावर क्वेरी एडिटर. उधर आप सारे क्लीनिंग स्टेप्स परफॉर्म करोगे, देन यू क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई, देन ऑटोमेटिकली द डेटा गेट्स लोडेड into your Power BI desktop once the cleaning step is done. Okay, so this is the meaning of what? So this is what the meaning of your Power BI transform data. ठीक है, so data is cleaned, structured and prepared for analysis using Power Query editors. ये सारे हम आगे पढ़ेंगे, like how to remove duplicates, how to handle the missing values, change the data types, ठीक है, renaming the columns. okay, ये सारी चीज़ें.
Okay, now let's try to understand about this visual. I'll do it. I'll show this. हाँ, I hope this part you understood, right? So Power BI के interface क्या है? We have a report view, we have a data view, and we have a table view. So what is a report view? So where we actually create and design the reports. Next we have the data view जहाँ से हम data को देख सकते हैं. What are the different types of data we have, different types of tables which we have imported into my Power BI desktop, and model view to maintain the relationship, kind of a schema design देख सकते हैं. So this is what we have just understood. Report view, data view, मॉडल व्यू एंड दिस इज कॉल्ड रिबन. ये सारे अलग अलग पेन्स हैं. वी हैव अ डेटा पेन, वी हैव अ विजुअलाइजेशन पेन एंड वी हैव अ फिल्टर पेन, एंड दिस इज द कैनवास और द डैशबोर्ड जहां पर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं. Yes, I think this intro part you understood, like how all the navigations between the Power BI. ठीक है. फिर हमने ये भी देखा है how to load the data in the Power BI. So you can go to your get data sections. So this is what the three buttons we saw: load data, transform data, and cancel. So load data will directly load the data into Power BI desktop, and the transform data will actually uh, sound there. I didn't understood, like side back and say, huh. Transform data. So transform data will um, transform the data in the Power Query editor and load that. After transforming, put the data into Power BI desktop. ठीक है. These things हमने देखा है. Data loading part ये हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है. Cleaning mods. Okay. So which part of ETL does Power Query present? Transform, because it transform. What is the answer for this? So which panel shows all the cleaning steps performed? Applied steps. ठीक है. वो steps हमने नहीं देखा अभी. हम देखेंगे. ठीक है. Okay. Fine. So now let's take it. Okay. So now I've just opened it. And now let's try to practice like how we can just get the data and try to get started with at least इसको use कैसे करते हैं, right? How to drag and drop and how the data gets worked. Okay. Right now I've dragged and dropped this orders. ठीक है. आप देख सकते हो we have a orders table. आप कोई भी चीज़ डेटा को सी राइट नाउ आई एम नॉट टेलिंग स्पेसिफिकली सम डेटा. आगे जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे सो आई विल बी शेयरिंग द स्पेसिफिक डेटा जब आप अपलोड कर सकते हो. बट राइट नाउ जस्ट प्रैक्टिसिंग ओके हाउ टू लोड एंड हाउ टू नेविगेट या व्हाट ट्रेन व्हाट डाउट यू हैव. ठीक है. सो राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन टू दिस चेक बॉक्स, जैसे आई क्लिक ऑन दिस कैटेगरी आईडी. अगर आप कोई भी चीज के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट विल सेलेक्ट सम चार्ट एंड डिस्प्ले इन योर डैशबोर्ड. ठीक है. इन योर रिपोर्ट सी अबे ऑटोमेटिकली कॉलम चार्ट दिखा रहा है. सो ऑटोमेटिकली एक टेबल चार्ट दिखा रहा है. सी दिस योर टेबल. ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया है. आई हैव जस्ट क्लिक दिस. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द वे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिटी देखना है, आई जस्ट टेल हियर सिटी एंड कस्टमर आईडी. ओके. मैं कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट सीइंग लाइक एज सून एज टिक दोज पर्टिकुलर बॉक्सेस. सो बाई डिफॉल्ट आपको पावर बीआई एक चार्ट बना के दे रहा है. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे. ये ऐसे कोई नहीं करता है बट दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे जहाँ से आप क्विकली अगर आपको देखना है. ठीक है. आई वॉन्ट वॉट प्रोडक्ट नेम से मुझे प्रॉफिट देखना है. क्लिक ऑन सम ऑफ, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ. सो नाउ बाई डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक कॉलम के लिए क्लिक करोगे सो ऑलवेज इट विल शो द टेबल फॉर्मेट. सो दिस योर टेबल चार्ट. इसको हम बोलते हैं टेबल चार्ट. ओके. जस्ट सेकंड आई एम गेटिंग या जस्ट अ सेकंड. ये हाईलाइटर है. बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन है, राइट? सो इट्स लाइक लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. मतलब
सिस्टम स्लो हो जाता है एक बार, एक सेकंड। ठीक है, ओके। सो अगर मुझे कोई भी चीज़ डिलीट करना है, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक दिस एंड डिलीट। ठीक है, सो डिलीट बटन या राइट क्लिक डिलीट। ओके, सो आपको हर हमेशा राइट क्लिक डिलीट या डायरेक्टली आप कीबोर्ड से भी डिलीट लगा सकते हो। ठीक है, आई शो वंस अगेन। सो व्हाट एवर द बाई डिफॉल्ट, अगर आप चेक कर रहे हो इस बॉक्सेस को, सो बाई डिफॉल्ट ये आपको टेबल चार्ट बना के दे देता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, आई सी लाइक हाउ टू चेंज दिस डिफॉल्ट ऑल्सो, बट दिस इज जस्ट अ हेलो काइंड ऑफ हेलो वर्ल्ड। है जैसे आप इस पर टिक करोगे ऑटोमेटिकली द चार्ज गेट सेलेक्टेड एंड सेम चार्ज यू कैन सी हियर। और आपको कोई भी जो जो इस बन चुका है, इफ यू वांट टू डिलीट दिस, सेलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, सो व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? सो सेकंड ऑप्शन इज यू कैन ड्रैग। ओके, सो ड्रैग का मेथड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस कैटेगरी इन माय कैनवास। ओके, सो बाय डिफॉल्ट सेम टेबल चार्ट, ए ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। आई वांट दिस कैटेगरी एंड इसके साथ साथ आई वांट जस्ट व्हाट आर द प्रॉफिट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। यू कैन सी आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, सो ड्रैग एंड ड्रॉप या इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सो सेलेक्ट इज वेरी ओल्ड, कोई नहीं यूज करता है, मतलब सेलेक्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेथड, मतलब अगर आपको कोई भी चार्ज बनाने, यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैट पर्टिकुलर कॉलम्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, सो जो आप इधर ऊपर देख रहे हो, राइट, सो दिस इज योर एक्चुअली टेबल नेम। ये ऑर्डर्स का क्या है? दिस इज योर टेबल नेम। Okay, this is your table name, and under this particular table name, okay, under this particular table name, so here we have how to get filters circuit. This should be visible by default. If it is not visible, you need to click on view and enable it. I think like by default जब आप Power BI open करोगे, this will be by default open. SMS क्या है? SMS अपरेश? Any doubts, guys? No, right? हाँ. If you're following the ETL process, then why does we go to Power BI and then do the transformations? Renu, that's what. See, Renu, I know like you'll not be doing transformations. मतलब ये this is there in this particular tool. मतलब ऐसे कई बार होता है कि like जो आप डेटा लेके आ रहे हो वेयर हाउस के अंदर, that data is not there in your फॉर्मेट। इन योर फॉर्मेट का मतलब है जो आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो, दैट डेटा इज नॉट इन योर स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो उसके प्लेस आप क्या करोगे? यू नॉट गोनो टू गो टू योर स्नोफ्लेक एंड डू द ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास सिर्फ पावर बीआई है, तो आप क्या करोगे? आप इधर पावर क्वेरी यूज करोगे, पावर क्वेरी एडिटर ट्रांसफॉर्म करोगे एंड लोड करोगे। I know like your valid doubt, right? You are thinking like why we need to do the transformation when the data is, ऐसे नहीं होता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, बहुत सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। सो इट्स नॉट दैट जब हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म होके स्नोफ्लेक के अंदर रहता है, इट्स नॉट लाइक ऑल द डेटा विल बी ट्रांसफॉर्म। ऐसे भी अगर डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ओके, देन ऑल्सो देयर कुड बी सम ऑफ द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल इन अ वे हाउ यू वांट टू सी द रिपोर्ट्स। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर हाँ, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, तो आप क्या करोगे? यू गोना लोड द डेटा, डू द ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड इट बैक। गॉट इट? रेनू, यू हैव आस्क्ड दिस डाउट, नो? हाँ, फाइन, ठीक है। प्लीज सी हियर। ओके, हाउ टू डिलीट? सेलेक्ट इट एंड डिलीट बटन या राइट क्लिक डिलीट, अंजना। ठीक है, सी दिस इज योर, जो आप इधर ऑर्डर्स देख रहे हो, दिस इज योर टेबल नेम एंड एक सेकेंड, ये बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। शैल आई क्लोज दिस? आई थिंक आप मेरा माउस डायरेक्ट, डू नीड हाईलाइटर और विदाउट हाईलाइटर इट्स ओके? डू नीड हाईलाइटर और विदाउट हाईलाइटर इज ओके, राइट? हाँ, ठीक है, बिकॉज वो लैग कर रहा है बहुत सारा। ठीक है, फाइन। सो दिस इज योर ऑर्डर्स एंड दिस योर टेबल नेम, एंड इस टेबल के अंदर वे सारे चीज़ें आप जो देख रहे हो, इट्स कॉलम नेम्स, कैटेगरी, सिटी, कंट्री। So how you look get to know like whether it's a categorical data or numerical data? So you can see this particular icons. क्या विद icons देख सकते हो? So what kind of icons you can see here? Sigma, correct? जहां पर आप सिग्मा देख रहे हो, एक्चुअली दिस सिग्मा आइकन इज फॉर द न्यूमेरिकल डेटा। सो जैसे अगर आप इधर सिग्मा देख रहे हो, सो दिस योर न्यूमेरिकल डेटा। अगर आप ये डेट का आइकन देख रहे हो, ठीक है, इफ यू आर सीइंग द डेट आइकन, सो ये आपका डेट का कॉलम है, दैट्स व्हाट इज द मीनिंग इज। अगर आप कोई भी चीज, कोई भी आइकन नहीं देख रहे हो, देन यू कैन गेस इट इज योर कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, या फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या अश्विनी ओके, दैट आई डू लेटर, बिकॉज अगर मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज किया ना, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, सो दिस इज योर कैटेगोरिकल डेटा, दिस इज योर न्यूमेरिकल डेटा, दिस इज योर डेट डेटा। ये आपको क्विक डेटा टाइप पता चल जाएगा कि आप कौन सा डेटा भी डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट इज योर न्यूमेरिकल डेटा, हाउ? बिकॉज यू हैव सिग्मा साइन। सो हियर योर स्मॉल डेट आइकन, ये आपका डेट का कॉलम है। अगर आप कोई भी आइकन नहीं देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू आर डीलिंग विथ योर कैटेगोरिकल डेटा। यस, अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन? इसमें मैंने सारी चीजें बताया। दिस इज योर टेबल नेम, और टेबल नेम, टेबल के अंदर जो भी जितने भी कॉलम्स, आप सारे कॉलम्स को देख सकते हो। सो यू कैन जस्ट क्लिक दिस एंड बाय डिफॉल्ट यू कैन सी द टेबल्स। ओके, एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो कैनवस के अंदर टू सी द डिफॉल्ट चार्ट, या अगर इसको आप रीनेम करना चाहते हो, सो ऑल वी हैव ऑप्शंस हियर। ओके, सो राइट क्लिक
वो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो ये सारे आप स्लोली पढ़ोगे, बट यू कैन डिलीट दिस कॉलम ऑल्सो. ओके, बट हियर जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड द डेटा टाइप्स. ओके, डेटा टाइप्स क्या है? सो यू कैन एक्चुअली सी दिस icons in the front of this particular columns. Explain once again. Yeah, Anshul, like I'm explaining, right? Okay, just to summarize. So right now I'm showing you how to build a charts, right? How to build any simple charts. तो उसके लिए you should know about the data, because right now I'm in the report view, and report view के अंदर ये तीन पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. The first pane is your data pane, जहाँ पर आप सारा data देख सकते हो, right? So here we have only one table, तो इसलिए I can see only one table here. जैसे आप इस पे expand करोगे, you can see what are the different columns present in that particular table. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा टाइप्स. आप क्विकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यू कैन सी दिस आइकन्स ओवर हियर. सो जहां पर आप सिग्मा देख रहे हो, दिस इज योर न्यूमेरिकल डेटा. एंड जहां पर आप ये डेट का आइकन देख रहे हो, योर डेट कॉलम. एंड जहां पर आप ये स्पेसेस देख रहे हो, एम्प्टी, मतलब कोई आइकन नहीं, इट्स कैटेगोरिकल डेटा. ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड नो इट. एंड इसको यूज कैसे करोगे? फॉर बिल्ड अ चार्ट्स, सेलेक्ट दिस या ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है. सो नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज, I'll just drag and drop this region. Okay, yeah, see for example I say I'll just drag and drop this particular region. So जैसे मैं drag and drop region कर रहा हूँ, I can see all the regions by default which is present in my that particular data. जैसे I have central region, east region, south region, west region. ठीक है, अभी because मैंने बताया by default ये table view देता है. You can see automatically gets tabled. और मुझे देखना है हर एक रीजन के अंदर सेल्स कितना हुआ है. सेम ड्रैग एंड ड्रॉप, आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड चेक इट, या चेक कर सकते हो. सी ऑटोमेटिकली गेट चेक्ड या ड्रैग एंड ड्रॉप. अभी क्या बता रहा है? सो हर एक रीजन के अंदर कितना सेल्स हुआ है. आई कैन सी दैट पर्टिकुलर व्हाट अ टेबल चार्ट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये आपको टेबल दे रहा है. मुझे टेबल नहीं चाहिए, आई वांट पाई. तो आप बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो. सो ये टेबल दे रहा था, बट आई वांट पाई, आई कैन सेलेक्ट दिस पाई. या मुझे कोई दूसरा चार्ट चाहिए, आई वांट लाइक दिस, आई कैन सेलेक्ट लाइक दिस. या मुझे बार चार्ट चाहिए, आई कैन जस्ट सेलेक्ट दिस. ठीक है. या मुझे दूसरा चार्ट चाहिए. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आई वांट दिस क्लस्टर्ड. अभी तक तो नहीं है क्लस्टर, बट आई कैन सी, आई कैन, व्हाट इज द मीनिंग हियर इज, अगर आपको जो बाय डिफॉल्ट चार्ट इधर दिखा रहा है, कैन एक्चुअली चेंज दैट पर्टिकुलर चार्ट बाय सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस. ठीक है. हाँ, सो यू कैन सी नॉट द चार्ट गॉट चेंज्ड. अगर मुझे नहीं चाहिए, व्हाट आई डू, सेलेक्ट डिलीट बटन या राइट क्लिक डिलीट. ओके, राइट क्लिक डिलीट. आई शो वंस अगेन. और दूसरा ऑप्शन क्या है? अब डायरेक्टली बोल सकते हो कि पाई चार्ट मुझे चाहिए. ओके, जैसे आप पाई चार्ट पे क्लिक करोगे, अब आपको सारे जो पैरामीटर्स चाहिए, सारे जो कंपोनेंट्स चाहिए पाई चार्ट बनाने के लिए, आपको सारे ऑप्शंस इधर दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो दिस इज लाइक, अभी बोल रहा है कि ठीक है मैं पाई चार्ट आपको बना के दूंगा, सो मुझे लेजेंड दो. क्या मुझे लेजेंड देना है? व्हाट इज लेजेंड? एल टेल. ओके, सो सी जैसे आप इसको होवर करोगे, आपको हेल्प भी मिलता है. जैसे व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ लेजेंड. अब ये लेजेंड बोल रहा है कि द कैटेगरिकल फील्ड टू शो फॉर कलर्स, मतलब हर एक कैटेगरी को अलग अलग कलर्स में मैं दिखाऊंगा, तो ऐसे मुझे डेटा दो. दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग, इज आस्किंग. ठीक है, दिस इज व्हाट द ऑप्शन इज. वैल्यूज, अभी बोल रहा है कि एक मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू दो जो मैं उस कैटेगरी को दिखाऊंगा. सो आई गॉट बोथ द इन्फॉर्मेशन, राइट. सो व्हाट आई डिड, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, आई कैन ड्रैग दिस रीजन इनसाइड. मैं अभी कैनवस पे ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, आई एम ड्रैगिंग इन द लेजेंड. सो जैसे लेजेंड में ड्रैग कर रहा हूँ, कि आई गॉट दिस 4 कलर्स, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? आई वांट दिस सेल्स. ठीक है, या प्रॉफिट. ठीक है, आई वांट प्रॉफिट, आई ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉफिट इनसाइड दिस वैल्यूज. अभी ऐसे भी चार्ट बन रहा है. ओके, सो अभी क्या कर रहा है? सो दिस टाइम आई हैव सेलेक्टेड द चार्ट एंड एडेड द वैल्यूज, एडेड वॉट एवर आई नीड फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ट. एंड व्हाट इज द अदर वे टूल? सो डिलीट कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट एंड दिस रिमूव, या आप सेलेक्ट करके विंडो से डिलीट लगा सकते हो. और मैंने ईजिएस्ट वे कौन सा बोला था? जैसे यू आर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. आई वांट दिस रीजन, आई ड्रैग हियर. आई वांट सेल्स हियर, आई ड्रैग हियर. ठीक है. एंड आई वांट दिस, आई डोंट वांट दिस डिफॉल्ट, आई वांट पाई चार्ट. अब इस तरीके से भी कर सकते हो. सो जैसे आप सेलेक्ट करोगे, सी ऑटोमेटिकली उसने ऑटोमेटिकली डाल दिया है. ठीक है, सी रीजन में, लेजेंड में जा रहा है, वैल्यू सम ऑफ सेल्स में आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ चार्ट इन डिफरेंट वेज, ड्रैग एंड ड्रॉप या सेलेक्टेड. ठीक है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो इज डिलीटिंग पार्ट, मैंने ऑलरेडी बताया. एंड नेक्स्ट इज, यू कैन सी दिस इज लाइक ए कैनवास, राइट. यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, सी चार्ट्स, कलर, ये सारी चीजें आई टीच. ओके, आई विल नॉट स्किप एनीथिंग, आई विल नॉट स्किप एनीथिंग. ठीक है, स्लोली आई टेल. ठीक है. हाँ, आई वॉन्ट यू टू जस्ट एक्सपीरियंस दिस, हाउ दिस इज बिल्डेबल. ठीक है, मैं आपको कोई भी चीज चार्ट्स भी नहीं सिखा रहा हूँ. आई एम जस्ट शोइंग यू लाइक हाउ वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड बिल्ड द चार्ट्स. ठीक है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज योर व्हाट कैनवस, जहां से आप प्लेस कर सकते हो वेयर यू वांटेड. ठीक है. सो आई अगर वो आपको इधर रखना है, कैन प्लेट इट. एंड दिस इज योर चेंजेबल, मतलब अगर आपको बड़ा करना है, ठीक है, यू वांट टू एक्सपैंड दिस, यू कैन चेंज इट. ठीक है. एंड इवन यू हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस, ये आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो हियर यू कैन सी वी कैन रिमूव दिस, एंड वी हैव सम एक्सपोर्ट डेटा. दिस आर सम फ्यूचर टॉपिक्स, आगे हम ये सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे. एंड राइट नाउ यू शुड नो हाउ टू जस्ट प्लेस दिस चार्ट इन सम डिफरेंट प्लेसेस एंड हाउ टू डिलीट दिस. अगर आपको साइज में थोड़ा चेंज करना है, कैन एक्चुअली चेंज दिस पर्टिकुलर चार्ट साइज लाइक दिस. यस.
ठीक है, एनी डाउट स्टिल हियर, व्हाटएवर आई हैव शोड इट, please do it in your, at least try this, the beginners or the new people who are exploring this. Understood? विघ्नेश, वो आगे सीखोगे. सो यू हैव ऑलरेडी लोडेड सम डेटा, अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा लोड करना है, सो दैट यू विल गोना लर्न इन द ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक. ठीक है, अश्विनी, दैट ऑल्सो विल लर्न. ठीक है, सो विच चार्ट टू यूज, व्हेन टू यूज. मैं चार्ट सबको नहीं पढ़ा, यूर नॉट, टुडेज सेशन इज नॉट अबाउट चार्ट्स, ये जस्ट अ यूआई एंड एक्सप्लोरेशंस. ठीक है, अंडरस्टूड. Okay, so now let me just delete this. I've used the pie chart here. Okay. So this is your data pane. Now coming back to this is your data pane. Okay. So in the data pane, we have all the data and the columns, and we know how to identify the charts in that particular column. So next thing we have is about the visualizations. So visualizations के अंदर आप दो sections देख सकते हो. So one section is about your add data, your visualizations. So जहाँ पर आप multiple charts आपको दिया है. So you can see, hover onto this and see the chart name. This is stacked bar chart, stacked column chart, okay, clustered bar chart. We have something called line charts, ठीक है, pie charts, and even you can get the some third party charts. मतलब third party means you can get the data from some third party जो which is there in your marketplace, right? Marketplace का मतलब है जो जिन लोगों ने दूसरे charts बना के रखा है. I want to use the particular charts. You can get the more visuals from the different places also, ठीक है. So this is like a display जहाँ पर आपको different different charts का icon दिया है, and हर एक chart का icon settings change होता है. For example, so जैसे if I select this bar chart, so bar chart का आप देख सकते हो सारा अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. उसके लिए आपको y एक्सिस देना पड़ेगा, x एक्सिस, लेजेंड देना पड़ेगा, फिर वी हैव सम अदर सेटिंग्स. तो जैसे आप पाई चार्ट पे जाओगे, सी पाई चार्ट बनाने के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. वी हैव ए लेजेंड, वी हैव वैल्यूज. अगर आपको लाइन चार्ट बनाना है, सी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईच एंड एवरी चार्ट हैज ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज टू एंटर. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पाई चार्ट बाय डिफॉल्ट बनाना है तो आपको पास करना है लेजेंड एंड वैल्यूज. अगर आपको फनल चार्ट बनाना है तो आपको पास करना है कैटेगरी एंड द वैल्यूज. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट चार्ट यू आर चूजिंग, यू नीड टू पास द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ओवर हियर. ओके, एंड जैसे आप कोई भी एक स्पेसिफिक चार्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, सो हियर यू कैन सी अदर टू ऑप्शन. दिस वाज नॉट देयर, राइट? सो अगर मैं बाय डिफॉल्ट if I'm just deleting this, ठीक है, so you can see that one of the option will go off. I can see only these two now. Okay, so one is your build. So this is your build visual, and this is your format. And जो भी इधर फॉर्मेट देख रहे हो, दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू योर चार्ट. आई टेल व्हाट इज दिस. जैसे मैं इस पे फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ, सो दिस फॉर्मेटिंग इज योर पेज, पेज का फॉर्मेट. मुझे बैकग्राउंड कलर, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव टू थिंग्स. वन इज योर कैनवास, वन इज योर वॉलपेपर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई गो टू दिस कैनवास बैकग्राउंड, तो मुझे व्हाइट कलर नहीं चाहिए, सो आई वॉन्ट ब्लू कलर. ओके, सो जो आप इधर सेटिंग्स देख रहे हो, आई थिंक इट शुड, हाँ, ट्रांसपेरेंसी आई मेक इट जीरो. हाँ, सो नाउ यू कैन सी इट गॉट चेंज टू सम कैनवस. जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, उस प्लेस को मुझे दूसरा कलर देना है. आई कैन जस्ट चेंज द कलर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस विजुअलाइजेशन. मतलब विजुअलाइजेशन सेक्शन के अंदर आप एक फॉर्मेट का सेक्शन देखते हो. दिस फॉर्मेट सेक्शन इज फॉर योर पेज सेटिंग्स. मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इफ यू गो टू योर सम स्पेसिफिक चार्ट, ये ऑप्शन चले जाएगा. सी, वे क्लिक ऑन पाई चार्ट, सी दैट ऑप्शन इज गॉन. ओके, अभी जो फॉर्मेट दिखा रहा है, ये फॉर्मेट आपको दिखा रहा है फॉर योर चार्ट स्पेसिफिक. ये आपको पेज का फॉर्मेट, पेज का फॉर्मेटिंग के लिए नहीं दिखा रहा है. फॉर एग्जांपल जो इधर फॉर्मेट का बटन जो दिखा रहा है, इट इज शोइंग द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर योर सेलेक्टेड विजुअल. सो जैसे आप पाई चार्ट के लिए कुछ चेंजेस करना है, आपको कलर चेंजेस करना है, कोई भी चीज चेंज करना है, सो इट इज शोइंग यू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर दिस. ओके, भाई गो बैक, आई डिलीट इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अंडू करना है, कंट्रोल जेड, सेम थिंग हाउ यू डू इट इन एक्सेल, कंट्रोल जेड, अंडू अंडू. ओके, एवरीथिंग, ऑल द सेटिंग्स विल गो ऑफ. ओके, अंडू कर सकते हो व्हेन यू कैन डू दिस पार्ट. ओके, दैट इज अंडू. ओके, कंट्रोल जेड. ठीक है, सो I'll just repeat it what I'm trying to say. Okay, visualization. In the visualization pane, we have two main options. One is your all the display of your charts, जहां से आप कोई भी चार्ट बना सकते हो. One. Second, हर एक चार्ट के लिए अलग अलग सेटिंग्स आपको प्रेजेंट है. सो विच इज, यू शुड बी वेरी केयरफुल while selecting the chart and what kind of properties और fields जो आपको उस चार्ट के लिए पास करना है. सेकेंड, सो जैसे आप इस पे, हाँ, जैसे अगर आपको दूसरा जो सेक्शन है, फॉर्मेट का सेक्शन है, अगर आपको कोई भी चीज़ इस पेज के अंदर चेंज करना है, या जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या वॉलपेपर, अल्टर टेल व्हाट इज वॉलपेपर एंड कैनवास डिफरेंस. कैनवास, वॉलपेपर, ठीक है, या अगर आपको कोई भी फॉर्मेट्स के अंदर चेंज करना है, या फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, ऐसी पेज इन्फॉर्मेशन, सारे बहुत सारे इसमें सेटिंग्स है. जैसे आपको पेज का नाम देना है, ठीक है, इसमें अलग अलग सी कैनवास सेटिंग्स, बैकग्राउंड कैनवास सेटिंग्स के अंदर आप बोल सकते हो कि मुझे 1619 का फॉर्म चाहिए,
जैसे वर्टिकल फॉर्मेट या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, या आप सारे विड्थ, बिकॉज कई बार जब आप रिपोर्ट्स बनाओगे यू शुड हैव सम मोर स्पेस। अब वो स्पेस कैसे डिसाइड करोगे, यू कैन गो एंड डिसाइड द स्पेस ओवर इन द कैनवा सेटिंग्स। ठीक है, सो दिस विल डिस्कस लेटर जब हम इस स्पेसिफिक टॉपिक पे जाएंगे। बट दिस इज द टू मेन ऑप्शंस विच राइट नाउ हैव, वन इज योर बिल्ड योर विजुअल एंड सेकंड ऑप्शन इज योर फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। सो जैसे इफ आई सेलेक्ट एनी वन सिंगल चार्ट, सो उस चार्ट के लिए अभी जो ऑप्शन दिखा रहा है, इट्स फॉर योर विजुअल, सी इट्स फॉर योर विजुअल। So I want what? Say a region. I'll drag and drop this region inside the legend and drag and drop this particular sales. मुझे हर एक region का sales देखना है, drag and drop in values. अब मुझे pie chart आ गया और इस pie chart के अंदर मुझे कोई भी formatting करना है. I want to do any sort of formatting here, so I can do that particular formatting in this particular section. So जैसे I'll go to this format, so आप देख सकते हो we have a different visual settings. और ये हर एक format भी change होता है depending upon your chart. Okay, right now मेरा chart है what पाई, पाई के लिए ए से सेटिंग दिखा रहा है, तो कई बार ऐसे होगा कि दिस इज नॉट देयर फॉर सम अदर चार्ट। तो इसका मतलब क्या है, हर एक फॉर्मेटिंग का जो भी सेटिंग्स होते हैं वो चार्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे लेजेंड बोल रहा है, सो आई वांट टू डिस्प्ले दिस, अभी राइट नाउ ऑन है, मुझे ऑफ करना है, सी आई टर्न इट ऑफ, अभी ऑफ हो गया, अब मुझे ऑन करना है, तो इसके बेसिस पे मुझे अगर कोई सेटिंग करना है, सी ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मैनेज हियर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सेंट्रल पोजीशन का उन्होंने दिया है, आई वांट सेंट्रल, या मुझे टॉप राइट लेजेंड मुझे ऊपर चाहिए, ठीक है, टॉप लेफ्ट में चाहिए, सी टॉप लेफ्ट, या मुझे बॉटम में चाहिए, या मुझे राइट में चाहिए, ठीक है, सो टॉप राइट स्टैक्ड, सी ऐसे कर सकते हैं। सो अगर मुझे कोई टाइटल के अंदर चेंज करना है, सी वी हैव ए टाइटल ऑप्शन। सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ दिस इज द टाइटल विच इज ऑन, अगर इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, सी नाउ द टाइटल इज गॉन फॉर दैट रीजन, रीजन का जो इधर टाइटल दिखा रहा है और मुझे नहीं चाहिए, आई टर्न इट ऑफ। ठीक है, सो अभी चला गया, आई वॉन्ट इट, आई टर्न इट ऑन, मुझे टाइटल पे जाना है, सो टाइटल के अंदर रीजन प्रेजेंट है बट उसके मुझे दूसरा नाम देना है, ओके, आई कैन गिव इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईच एंड एवरी सेटिंग यू कैन मैनेज इट फॉर ईच एंड एवरी चार्ट। तो ये सारे चीज़ें वन बाय वन will not be learning. I mean, like in the case of like हर एक ऑप्शन नहीं दिखोगे, this is something which is more self explanatory. So जैसे आप मल्टीपल या जो मेन फॉर्मेटिंग्स हैं, ओके, विच इज लाइक अ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जहाँ पर हर एक रिपोर्ट में इस तरीके के यूज़ किया जाता है, वी गोना लर्न ऑल दोज थिंग्स। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं विच इज लाइक मोर डिटेल सेटिंग्स, सो दैट थिंग यू शुड एक्सप्लोर ऑन योर ओन, बट आई एम शोइंग यू ऑल दी वेज। मतलब अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करना है, यूर टेलिंग दैट ओके मुझे इस वैल्यूज को चेंज करना है, सो यू कैन एक्चुअली चेंज दैट पर्टिकुलर वैल्यूज। अभी कौन से सेक्शन में आता है, सो दैट सेक्शन इज कम्स अंडर योर डिटेल लेबल। सी अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, सो नाउ दैट लेबल सेटिंग्स हैज बीन गॉन। ठीक है, अब इसको ऑन कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग दैट सेटिंग्स। अब मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है, सी आई कैन जस्ट चेंज द वैल्यूज। जैसे वैल्यू पे जाओगे, मुझे इसको बोल्ड करना है, आई मेक इट बोल्ड, ओके। अब मुझे थोड़ा इसका जो भी फॉन्ट है उसको चेंज करना है, या मुझे कलर चेंज करना है, आई वांट टू मेक इट सम ब्लू कलर या रेड कलर, सी अब रेड चेंज हो गया। या मुझे इसे इटैलिक बनाना है, या इसका मुझे साइज इंक्रीज करना है थोड़ा, सी ऑटोमेटिकली गेट्स अपडेटेड। ठीक है, सो दिस विल बी नॉट देयर फॉर सम अदर चार्ट। फॉर एग्जांपल आई गो बैक, अब मुझे दूसरा चार्ट बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, इसी चार्ट को सेलेक्ट करके दे गोना दे विल बी स्ट्रगलिंग लाइक वे टू गो। तो आपको हर हमेशा एक चार्ट बनाने के बाद यू नीड टू कम आउट, आई विल कम आउट। ठीक है, अब मुझे नया चार्ट चाहिए, आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस लाइन। ठीक है, लाइन, तो इस लाइन चार्ट के लिए जैसे जैसे सेलेक्ट लाइन, ठीक है, इस लाइन चार्ट के लिए आप देख सकते हो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, सी। सो इस लाइन चार्ट के लिए वी हैव फॉर्मेटिंग, अभी हमने को ड्रैग नहीं किया। जैसे मुझे एक्स एक्सिस देना है, वाई एक्सिस देना है, सो एक्स एक्सिस में हम दे सकते हैं सेल्स, ठीक है, या डेट देख सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू सी लाइक डे वाइज सेल्स, एक्स एक्सिस ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड मुझे सेल्स के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वाई, okay, can see I can see some sort of line graph, और इसके लिए I can see the formatting issue, see here formatting issue। so x axis में अगर मुझे कुछ change करना है I can change it, अगर मुझे y axis में कुछ change करना है I can change it। okay, so I hope you understood what I am trying to say। so formatting issues keeps changing based on the chart type। yes, fine, for some reason see now this is selected, अब ये कैसे पता चलेगा ये selected, because you can see this box is highlighted। ठीक है, मुझे अभी line chart नहीं चाहिए, for example I've selected this, for some reason I don't want this particular chart, so I'll just go here, I want this time bar chart। ठीक है, I'll just select bar, अभी bar automatically update हो गया। ठीक है, और इसके formatting issues अलग है अब, see, so now you can just change based on x axis and y axis। okay, so for today this is much is enough, okay, so tomorrow we'll continue from here। so make sure you just practice the UI, just drag and drop this particular interface, and कल हम एक simple dashboard बनाएंगे, very small dashboard, and through that building process you learn like how to make this kind of edits, okay, how to add the charts, how to make the changes in the charts, right? so अब इसी process में you're gonna learn it। तो इसके लिए I hope you are getting an idea
तो आप सिर्फ देख के नहीं सीख सकते हो. So you need to actually play with this. So you need to drag and drop, make mistakes, delete it. Okay, so then only you'll able to learn this Power BI. So Power BI is something which is needs completely hands-on. So without doing the hands-on, you're not able to learn anything here. ठीक है. So last 50 minutes now I'll take up a doubts. अगर आप कोई भी doubts है, you can just you can ask me. The others can leave. Okay, tomorrow we'll continue from here. ठीक है. Sachin, dashboards is a one of the I'll show you what is a dashboard because right now we're asking. So dashboard actually comes in your Power BI service. So Power BI service के अंदर आप dashboard बना सकते हो. What is dashboard? It's a data coming from multiple reports in simple terms. अगर आप बोल रहे हो सर कि हम डैशबोर्ड पावर बीआई डेस्कटॉप में बना सकते हैं, नहीं. आप डैशबोर्ड बना सकते हो सिर्फ पावर बीआई सर्विस के अंदर. सो हियर यू कैन सी, सो आई कैन क्लिक ऑन क्रिएट एंड आई कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ओके, इससे भी आप लाइट वेट कर सकते हो, कैन गेट द डेटा. मतलब बहुत सारा डेटा सोर्स में अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आई शो दैट. ओके, आगे जब जाएंगे सो विल सी द डैशबोर्ड इज क्रिएटेड बाय ब्रिंगिंग डेटा फ्रॉम, सो बिल्डिंग अ चार्ट्स और द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल रिपोर्ट्स. ठीक है. क्या आप रिपोर्ट्स बना सकते हो पावर बीआई सर्विस के अंदर? यस, बना सकते हो, बट इट्स नॉट मेंट फॉर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट्स हियर. टू क्रिएटिंग अ रिपोर्ट्स ओनली मेंट फॉर पावर बीआई सर्विस. सर आधा कट गया है. व्हाट, क्या कट गया है? सॉरी. हाउ टू गेट दिस इक्वल होल प्रोसेस. ठीक है. हाँ. ओ, ही डिड लास्ट पार्ट. ठीक है. आई शो इट. So for example, see now you can get the data and connect to your SQL server or SQL server से कर सकते हो. I'll show that last part. So for example, that ETL, I'll just finish it. So in that ETL, so I have just kept everything same. और एक pipeline बनाने का idea था, but anyways, you can just create it the same way. I'll open this dot GUI dot bat. ठीक है. I'll click on run. If you have forgot the SQL password afresh, you just delete that MySQL and try to create new one. Because resetting password is very headache. I'm like, I suggest you uninstall it. Uninstall करके आप new installation कर देना. Uninstall कैसे करोगे? Go to your settings, apps, uninstall your MySQL. So how do we'll pack? Uh, Vikas will be practicing. So what I suggest is you just watch the complete lecture, and after the class, I want you to create the dashboards. Just replica. See, पहला जो sessions रहेंगे, I want you to create a exit replica बनाओ. Replica मतलब so जैसे मैंने चार्ट बनाया आप उसी तरह चार्ट बनाओ. ठीक है. So ऐसे बहुत सारे चार्ट्स बनाओ so that you'll understand like how to create this chart building process. सो उसके बाद फिर हम सीखेंगे लाइक विच चार्ट टू यूज ऑन व्हाट सिचुएशंस, लाइक ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंगली जैसे हम प्रोसीड करेंगे वी गोना लर्न दैट. पहले ट्राई टू रेप्लिका, मतलब जो हम बना रहे हैं ट्राई टू रेप्लिका द सेम थिंग. ठीक है. फाइन. सो लास्ट क्लास आई वाज डूइंग दिस राइट. सो पीडब्ल्यू क्लास कस्टमर पाइपलाइन, सो जहाँ से हम डेटा को रीड कर रहे थे, वी वेर रीनिंग द फील्ड्स, डेटा को फिल्टर कर रहे थे, कंकैट करके हम स्नोफ्लेक में डंप कर रहे थे. ठीक है. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है एक्चुअली. आई व्हाट माई बैड इज आई हैव पेस्टेड सम रॉन्ग सीक्वल. स्नोफ्लेक का मैंने डेटाबेस बनाया है कोई दूसरे प्लेस के अंदर और मैंने शेयर किया है कोई सा दूसरा स्नोफ्लेक का लिंक, इसलिए एरर दे रहा था. सो इट्स द सेम सेटिंग्स. ओके, माय कनेक्शन इज स्नोफ्लेक, मेरा स्टेजिंग है स्कीमा है स्टेजिंग, मेरा टारगेट है स्टेज कस्टमर्स, एंड आई एम जस्ट टेलिंग दैट गेट ऑल दिस फील्ड्स. ठीक है. सी नाउ इवन आई हैव ओपन दिस. सी मेरा स्टेजिंग ऑलरेडी मैंने एक बार रन करके दिखाया है. यू कैन सी दिस इज व्हाट द डेटा हैव. ठीक है. लेट मी जस्ट रन इन फ्रंट ऑफ यू. सो अभी क्या कर रहा है, यू विल गोना रीड द डेटा फ्रॉम माई सीक्वल, get the data from I'll click on launch. See अभी सारा one by one execute होगा. See read customer one by one. So read customer, then rename the fields जो हमने concat किया था राइट. फिर फिल्टर किया जहाँ पर स्टोर आईडी, नॉट स्टोर आईडी, जो कस्टमर्स एक्टिव है. सो ऑल दोज कस्टमर्स. ठीक है. इट गॉट लोडेड. सी इफ आई क्लोज इट, अब ऐसी ये सारा जो राइट टिक्स दिखा रहे हैं इसका मतलब ये सारा एग्जीक्यूट हो चुका है. सो अकॉर्डिंगली अभी क्या कर रहा है, रीड कस्टमर, मेरा सकीला का जो कस्टमर्स का डेटा था वो रीड कर रहा था फ्रॉम माई सीक्वल. हम उसको रीनेम किया. सो आप देख सकते हो वी हैव रीनेम दैट सम कॉलम्स. जैसे फर्स्ट नेम को वी हैव मेड इट एज ए कैपिटल फर्स्ट नेम एंड स्मॉल नेम को में हमने मिला के लास्ट नेम. ठीक है. इसको हमने रीनेम किया. इस लाइट वेट ट्रांसफॉर्मेशंस. तो इसको आपको इसमें अब क्या पता चल रहा है, गेट टू नो दैट दिस इज हाउ वी डू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन एटीएल. सो जो आप फिल्टर भी कर सकते हो बिकॉज हमारा कंडीशन था कि लाइक जो कस्टमर्स एक्टिव हैं, सो ओनली दोज कस्टमर्स आई वांट.
तो हमने एक्टिव का फील्ड सेलेक्ट किया और हमने बताया ठीक है आई वांट ओनली द एक्टिव कस्टमर्स। इसका मतलब है हम डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम कंकैट भी किया। सो कंकैट का मतलब क्या है, बिकॉज फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ साथ आई वांट सम न्यू कॉलम, इट्स कॉल्ड फुल नेम। आप देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ कि आई वांट टू क्रिएट सम न्यू फील्ड कॉल्ड फुल नेम। एंड मैं दो चीज़ों को जो कंबाइन कर रहा हूँ दैट्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और ये मेरा सेपरेटर जो है वो स्पेस है। सो आई जस्ट एग्जीक्यूटेड और मैं डंप कर रहा हूँ, वेयर आई एम डंपिंग स्नोफ्लैक। So when I executed, ये सारा execute हो चुका है. So now I can go back and verify that. See, so if I do here stage customer, select star or view some sample data, या preview the table. So आप इधर देख सकते हो, I can actually see that full name also now. See, हाँ, कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम सी कैपिटल हो गया, फुल नेम बाय डिफॉल्ट आपको स्नोफ्लेक सारा कैपिटल ही दिखाई देता है इधर। सी इवन दी फुल नेम, सी दिस इज व्हाट वन थिंग वी डिड राइट, फुल नेम इसे आप देख सकते हो स्पेसेस। सो फ्रॉम हियर आई कैन कनेक्ट टू द पावर बीआई एंड आई कैन build some reports. This is an idea of using an ETL tool. तो इसी तरह आप multiple pipelines बना सकते हो. So if you just watch that ETL thing, I told like how to create a pipelines, right? अब इसी तरह multiple pipelines बना सकते हो. Multiple pipelines बनाने के बाद अब एक workflow बना सकते हो, जैसे मैंने कस्टमर का एक पाइपलाइन बनाया था, फिर मैंने एक पेमेंट का पाइपलाइन बनाया था। ओके, सो दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। पेमेंट का एक पाइपलाइन, आई जस्ट शो लाइक व्हाट इज अ पेमेंट पाइपलाइन। सो टेबल का इनपुट लेके आई एम जस्ट डूइंग द ग्रुप बाय, किस बेसिस पे ग्रुप बाय कर रहा हूँ, सो कैन सी आई एम जस्ट डूइंग द ग्रुप बाय बेस्ड ऑन द पेमेंट मेथड। कहाँ पर, हाँ, बेस्ड ऑन दिस कस्टमर आईडी, मतलब ग्रुप बाय मैं कर रहा हूँ बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी। हर एक कस्टमर ने कितना पेमेंट किया है तो उसका मैं टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो सी सम कर रहा हूँ, फिर एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग सम पेमेंट पाइपलाइन। सो मैंने दोनों पाइपलाइंस को बनाया ऑलरेडी। ठीक है, पाइपलाइंस बनाने के बाद इसको भी आप रन करके देख सकते हो। फिर मैंने एक वर्क फ्लो बनाया। वर्क फ्लो का मतलब क्या है, इन दोनों पाइपलाइंस को जोड़ना, इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ अ वर्क फ्लो। मतलब वी कैन क्रिएट ए इंडिविजुअल पाइपलाइंस, एंड इंडिविजुअल पाइपलाइंस बनाने के बाद सी अब ये ऑटोमेशन में चलेगा। सो हर दिन आई कैन जस्ट क्लिक ऑन, जैसे मैंने एक टाइमलाइन सेट किया है, सो नॉट टाइमलाइन, आई एम लाइक एक ऑर्केस्ट्रेट किया है एवरी डे 9 AM। सो एवरी 9 AM स्टार्ट करेगा लोड कस्टमर पाइपलाइन। अगर मेरा माई सीक्वल के अंदर कोई डेटा चेंज हो रहा है तो लोडेड, फिर वो पेमेंट कैलकुलेट करेगा। तो आई कैन सी दिस लोड पेमेंट टेबल इन द स्नोफ्लेक ऑल्सो। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया टू गिव इट, दिस इज हाउ द ETL लुक्स लाइक। ओके, सो ये मैंने अपाची हॉप यूज करके आपको किया है, बट इन्फॉर्मेटिका, SSIS, कोई भी दूसरा ETL टूल हो वो भी इसी तरह काम करता है। आप अलग अलग मैपिंग्स बनाते हो, फिर आप उन दोनों को वर्कफ्लो जैसे जोड़ते हो, दिस इज हाउ यू रन इन द ऑर्केस्ट्रेशन। Okay, so this was the idea about like how the ETL will actually work in the background, right? So आपको अभी सारा entire section आपको I think समझ में आ गया, right? So you have a data sources, फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे ETL टूल के मदद से, फिर उसको आप डंप करोगे स्नोफ्लेक के अंदर या कोई भी डेटा वेयर हाउस, और उधर से आप पावर BI को कनेक्ट करके रिपोर्ट्स बनाओगे। सो नाउ यू हैव एंटायर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप कोई भी अच्छा वाला प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जस्ट थिंक ऑफ गेटिंग अ डेटा फ्रॉम सम गुड सोर्सेज, रियल टाइम जैसे शॉपिफाई डेटा, उसको आप लोड करो यूजिंग फाइट्रेन या कोई भी ETL टूल जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको आप डंप करो स्नोफ्लेक के अंदर। फिर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लिख सकते हो, जैसे अगर आप नए व्यूज बना सकते हो, स्टोर प्रोसीजर्स बना सकते हो, ठीक है। फिर आप उसी को पावर BI के अंदर लोड करके उधर भी आप थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके उधर आप चार्ज बना सकते हो। सो दिस विल एक्चुअली विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस डेटा एनालिटिक्स, राइट। अब ये सारे प्रोजेक्ट आप रेज्यूमे में डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट हैज टू बी बिल्ड। सो अगर आप मुझे पूछे सर कौन सा डेटा सेट, दैट यू नीड टू एक्सप्लोर। ओके, सो देर आर लॉट मेनी वेबसाइट्स, ओके, जहां पर आपको API से डेटा आता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से यू कैन एक्सप्लोर ऑन दिस ऑन। गॉट इट, फाइन। हाँ, कैगल से भी लेके आ सकते हो, ठीक है, बट कैगल बहुत ही स्टैटिक हो गया, राइट। स्टैटिक डेटा नहीं करना है, जस्ट थिंक ऑफ शॉपिफाई, बिकॉज शॉपिफाई मैंने अच्छा एग्जांपल दिया, ये आपको रियल टाइम सिनेरियो देगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्कीमा है उसका। सो आप शॉपिफाई से फाइट्रेन को कनेक्ट करो, फिर फाइट्रेन से स्नोफ्लेक को कनेक्ट करो, आप सारा डेटा शॉपिफाई का सैंपल डेटा स्नोफ्लेक के अंदर डालो, फिर आप एक अच्छा वाला सेल्स डैशबोर्ड बनाओ इन योर पावर BI। तो इट्स योर वेरी रियल टाइम यूज केस प्रोजेक्ट, राइट। अगर आप ये अच्छे से कर रहे हो नो, सो इवन सम क्लाइंट्स कैन रीच यू आउट। अगर आप ये फ्रीलांसिंग जैसे कर रहे हो, देन यू कैन कॉन्फिडेंटली टेल आई एम वर्कड विद स्नोफ्लेक, आई नो लाइक व्हाट आर डिफरेंट टेबल्स एंड डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, आई कैन डू इट, राइट। सो आप ये बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट द डैशबोर्ड्स हैव क्रिएटेड फॉर द शॉपिफाई, करेक्ट। सो दिस इज योर एंड टू एंड प्रोजेक्ट, दिस हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हाँ, सी आप शॉपिफाई से डायरेक्टली पावर BI को कनेक्ट नहीं कर सकते। आप कोई भी डेटा सोर्स जैसे जहां पर आपका डेटा लैंड हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन ऐसे प्लेस पे आप कर सकते हो, एंड इवन API से डेटा लेके आ सकते हो। इवन द पावर BI जैसे वेबसाइट है, सारा स्टैटिक डेटा होता है, इट्स नॉट समथिंग विच इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है।
Yeah, Saurabh, you can do that. You can get the data world DB, ठीक है, and try to connect it with, जैसे for example ये थोड़ा प्रैक्टिस, फाइटन थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक आपने दो टूल्स को विजुअली देखा है, इन्फॉर्मेटिका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अनलेस यू हैव लर्न दैट यू नॉट एबल टू वर्क। अपाची हॉप मैंने थोड़ा आपको इंट्रो दे दिया है, सो इफ यू आर एटलीस्ट नो लाइक हाउ टू बिल्ड दिस, सर्च फॉर द कंपोनेंट्स, थोड़ा हेल्प लेके यू कैन डू इट। बट फाइटन बहुत ही सिंपल है, राइट? सो यू कैन जस्ट कनेक्ट इट, लोड द डेटा। ये आपको ELT करके दे रहा है, एक्सट्रैक्ट लोड एंड देन यू डू द ट्रांसफॉर्म इन योर स्नोफ्लेक। फाइट्रेन थोड़ा सिंपल है, ठीक है। सो बट आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इन दैट फाइट्रेन, आप कर सकते हो इट फाइट्रेन के अंदर, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। डीबीटी करके एक टूल है, सो उसको कनेक्ट करके आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। ठीक है, फाइन। So for the Power BI, please practice till here. Tomorrow we'll do some एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। सो आई टेक सम सैम्पल डेटा, विल एटलीस्ट ट्राई टू क्रिएट वन सिंपल डैशबोर्ड। डे 2 में हम एक सिंपल डैशबोर्ड ही बनाना सीख लेंगे। देन विल लर्न स्लो लाइक हाउ अबाउट द पावर क्वेरी, मतलब कैसे हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, एंड ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जब हम इसको सेव करेंगे, हम अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं, जैसे PBIX, PBIT, PBIB, ठीक है। बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। We have something called direct connect, okay, import, live connections, ये सारे चीज़ें slowly learn this, ठीक है। Okay, so I'll just share this link, so others can drop if you don't have issues. Any other doubts? I'll share this one last time, this link. So आज के लिए we don't have any class resources, only the slides part and this thing. Good, good, Gayatri. You can just send me that. You send me, I'll just check it. Swiggy one is AL limited, whether no it's on drop that Excel project. Now I'm applying continuous, but you send me that, Gayatri. I'll just check it, ठीक है। Telemetric dashboard with 7 KPIs and then add a chart like bar pie. I'm applying continue. You send it, I'll check it. Okay, even send your resume also, I'll just check it. Okay. Okay. So this is your today's resources. I'm having GitHub, and the people who have asked me have sent. I already see some mails. Okay, regarding the SQL topic. I'll reach you out. Okay, I'll just connect it and I'll make sure that your doubts are cleared. Fine. Okay. I don't know, but ETL is showing errors of file. What errors you're getting? So maybe connection का issue होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपने ठीक से किया है तो दैट्स फाइन। आई ठीक है, दिस वॉज जस्ट एन एक्सपोजर। अगर ऐसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब अनलेस यू डोंट नो ऑल दिस कंपोनेंट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? सो आई सजेस्ट यूज फाइटन इटसेल्फ, या आप इसी को रेप्लिका करो, बिकॉज मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है लाइक हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड हाउ टू वर्क विद दिस। ओके, सो बिकॉज कई लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आई नो, लाइक इफ यू हैव नॉट यूज दिस, राइट, ये लाइक समथिंग लाइक मोर कोई अलग ही चीज़ है ऐसे दिखाई देगा, सो आई कैन अंडरस्टैंड। सो व्हेन पीपल आर, I know, like based on the question they're asking, I don't know how much they've understood this particular tool. Uh, there is some other tool also, Pentao. I used to teach that tool for some batches. उसमें भी बहुत सारा complexity है, then I've just dropped it. Okay, then I chose this. इसमें भी थोड़ा complexity है, so better go with Fightrain. So Fightrain is much simpler to understand the flow. अगर आपको specifically seriously कोई tool पढ़ना है, just learn the Informatica, ठीक है? Soundar, yeah, I know, like freelancing is, I'll show you one. Not to, I don't know, let me just show. Okay, recently I just got one requirement for the fight train. Okay, so I'll just show you like how the people will reach you out in case if you have kind of an experience or you have done some similar jobs. I just wanted to show the use case. Okay, just give me a second. I'll just log in. I'll because मैं सारा data share नहीं कर सकता, because there's something uh, we can't मतलब सारे डायरेक्टली जो कॉन्वर्जेशन है विच पेज है, सारी चीज़ें नहीं कर सकता, बट आई कैन शो लाइक व्हाट द क्लाइंट हैज़ रिक्वेस्टेड। ओके, सो देन विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। एक सेकेंड, होल्ड ऑन, आई विल पेस्ट इट हियर समवेयर सो दैट यूल रीड दिस। अब एक बार एक पढ़ के देखो, से लाइक हाउ दे आर रीचिंग, हाउ दे आर रीच आउट एज ए, लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग या एज ए कुछ
अगर आपने फ्रीलांसिंग किया ना, आई थिंक यू गोना लर्न मेनी थिंग्स, एंड उसके लिए यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। मतलब इसका मतलब है कि नहीं डायरेक्टली आपको डे वन में सारा चीज़ें मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू क्रिएट वेरी गुड प्रोफाइल्स, डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ओके, सो आई एम गोना पेस्ट। मेरा एक फ्रीलांसिंग साइट से आई जस्ट गॉट वन ऑफ द रिक्वेस्ट रिसेंटली है, लाइक रिसेंटली व्हेन आई से लाइक 1 or 2 days बैक। सो इट वाज विद रेस्पेक्ट टू द फाइट ट्रेन एंड अदर थिंग। क्या हो रहा है? ओके, ओके, सो आई एम जस्ट पेस्टिंग हियर। आप एक बार देख लेना। ठीक है। सी सी दिस हाउ दे रीच आउट। अगर अगर आपको ऐसे कुछ जो जो फ्रीलांसिंग के क्वेश्चन पूछ रहे थे, राइट? सी दिस हाउ दे गोना रीच यू आउट। सी शी इज आस्किंग लाइक आई एम लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस डेटा इंजीनियर और एनालिस्ट टू हेल्प मी बिल्ड अ कंप्रेसिव ई कॉमर्स एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना है। ओके, व्हाट दे नीड इट, ओके, व्हाट दे हैव, दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट ओवरव्यू इज। सो वो बोल रहे हैं कि दे हैव द मल्टीपल अमेजॉन सेलर अकाउंट्स, मतलब उनके अलग अलग